Assalamu alaikum and good afternoon and good evening too, because it's evening still here in this part of the world, and it's early evening, I can say, here at the center of such a beautiful and iconic win. Nazir was surprised for a while that why is it the good evening or the good afternoon. It's it's early evening here at the center of a beautiful place of Srinagar, that is the Bakshi Stadium, the iconic one. Thank you, Nazir, for that little smile, the very smile on his face. And the two teams in the middle, we got United Import Srinagar taking on Hillview Rajouri, and Rajouri need to win this one at any cost. Hillview, they need a perfect view to go on to climb 2 more points to stay alive. And talking about that qualification scenario, they need 1 more win here. And teams can also qualify with having just 2 points, but there are going to be the circumstances in Sultan's group, and they are still in the competition because of that 1 victory. The 5th team, that was the Spectrum Kings, they lost the 4 games on the trot. That means they have no game left, and if Sultans lose the next game against Soport's Challenge, they will still qualify for the next round on behalf of just 2 points. But here in this group, it's a group of death, and there is a totally different situation at the moment. Global Judo Titans, they lost 2 games on the trot out of 3. This side has won. Out of 3, they won one and lost 2 games. So that means they need to win this one to finish on 4 points. And if they lose this one, they will be having just 2 points. Then their team will rely and depend on other results, and that will decide their fate in the tournament and in this event. And in the meantime, United Imports opt to bat first. Their captain won the toss, and without any hesitation, he decided to put on runs on the board. Let's join the action. I got Nazir in the com box. It's over to you, Nazir, to carry on with the game of cricket and try to explain it to the beloved listeners and viewers of JK Sports Time early this evening here at the Center. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत, शुभ संध्या। हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब और यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के बीच इस पूल का ये दोनों टीमों के लिए आखिरी लीग मुकाबला। यूनाइटेड इंपोर्ट्स 3 मुकाबले, तीनों में जीत। हिलव्यू राजौरी 3 मुकाबले, 2 हार और 1 जीत। ये है अब तक का इस पूल का विश्लेषण। चौथा मुकाबला हिलव्यू राजौरी के लिए, चौथा मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए। यूनाइटेड इंपोर्ट्स कदरे बेहतर क्योंकि उन्हें तीनों मुकाबले जीते हैं। यहाँ 3 में से 1 जीत और 2 हार। ये मुकाबला जीतना अवश्य। हिलव्यू राजौरी के लिए कुछ चेंजेस जरूर की गई हैं। ऋतिक सिंह आज टीम में आए हैं और उसके अलावा सोबरवाल भी टीम का हिस्सा बने हैं और कुछ अन्य चेंजेस भी जरूर हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नए चेहरे और दिग्गज चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं हिलव्यू राजौरी द्वारा। यूनाइटेड इंपोर्ट अगर वही टीम खिलाई है जो पिछले 1-2 मुकाबलों में देखने को मिली है। शुरुआत होने जा रही है। यूनाइटेड इंपोर्ट्स टॉस जीतने के बाद सीधे बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और प्रारंभ होने जा रहा है ये 14वां मुकाबला, मैच नंबर 14, जेके सुपर सीमेट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और पहली गेंद, लेट्स प्ले। शुरुआत होने जा रही है पहली पारी यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले मुकाबले में सुल्तान की जीत, दूसरा मुकाबला दिन रात्रि का ये मुकाबला, और हिलव्यू राजौरी की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है। तो चलिए शुरुआत होती हुई पहली गेंद लेकर के बाएं हाथ के जीशान के लिए हल्के हाथों के साथ टैप किया, वही सामने ऑफ साइड में बगैर किसी रन के। शुरुआत होती हुई जीशान अली और साहिल ने शुरुआत की है बल्लेबाजी में, और गौरव चौधरी का इस्तेमाल किया गया है गेंदबाजी में। शुरुआती ओवर गौरव चौधरी, दाएं हाथ के गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज। हालांकि उनके पास उतनी ज़्यादा गति नहीं है, पर इस विकेट पे जितनी आप गति परिवर्तन करते हो उतना आप सफल रहते हैं। तो शायद यही कारण है शुरुआत में उनसे गेंदबाजी करवाई है टीम में हिलव्यू राजौरी ने। एक और अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद हल्का सा उछाल था, मिडिल स्टंप पे आ रही थी गेंद, एक कदम आगे निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचते हल्के हाथों के साथ वापस खेला बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। तो शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की यूनाइटेड इंपोर्ट्स वर्सेस हिलव्यू राजौरी। यहाँ पे स्वीप के अंदाज में खेला, सफलता मिली, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका और पहले
रन मिलते हुए यहाँ पर यूनाइटेड इंपोर्ट्स को जीशान अली के बल्ले से निकलने वाला ये चौका, यूनाइटेड इंपोर्ट्स 4 बगैर नुकसान के। शुरुआत बेहतर, जीशान अली ने पिछले मुकाबले में एक बेहतरीन पारी खेली थी, इस बार खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, पर पीछे का तैनात है, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। और जिक्र करें यूनाइटेड इंपोर्ट्स की, यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने पिछले लगातार 3 मुकाबले जीते हैं आत्मविश्वास के साथ। हालांकि आज वो पुलवामा में मुकाबला हारे हैं, क्वार्टर फाइनल की दौड़ से वो क्वार्टर फाइनल में वो मुकाबला खेल रहे थे और क्वार्टर फाइनल वो हारे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं नए सिरे से यहाँ पारी प्रारंभ करनी होगी इस मुकाबले में, क्योंकि इस मैच की बात करें, इस टूर्नामेंट की बात करें, अलग प्रकार का मैदान है, अलग प्रकार का आत्मविश्वास लेकर के उतरी है। पिछले 3 मुकाबले जीते हैं, साहिल गजब के फॉर्म में, और पिछले मुकाबले में जीशान अली ने बेहतरीन पारी खेली थी, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास है इस टीम में, और उस आत्मविश्वास के साथ आपको बल्लेबाजी करनी है। 1 ओवर की गेंदबाजी, 5 रन बने पहले ओवर में, वो 5 के 5 जीशान अली के खाते में। और कुछ चेंजेस जरूर आज हिलव्यू राजौरी के खाते में, ऋतिक सिंह आए हैं और उसके अलावा सोबरवाल लाए हैं, और एक और खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो थोड़ा कोशिश ज़रूर है कि ये मुकाबला जीतना अवश्य है, क्योंकि 1 मुकाबला जीते हैं, 2 में हार। यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने 3 मुकाबले जीते हैं, और अपने पूल की अगर हम बात करें, पूल बी की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अंक तालिका में यूनाइटेड इंपोर्ट्स, और वहीं पे 1 मुकाबले में 2 अंक हैं, तो ये पूल बी का आखिरी लीग मुकाबला। Thank you, Nazir. 5 for none after the completion of over number 1. The 2 men in the middle, 2 informed batters. One is Sahil, who is the only centurion, and he's got another record of quickest 50 in the tournament under his belt. And Zishan Ali has scored a 50 in another game, or we can say the previous encounter here. It's a different game. They won their 3 games on the trot. They have 6 points on the point table. Hillview Rajouri. There are a couple of changes in today's game, making some adjustment and knowing that it's a event full of competition, and it's going to be stiff competition on cards, and works it away to mid-on area. Just a single, 6 for none after 1.1. This is the second over we are in. Zishan Ali is batting on 6 of 7 balls. And Sahil is yet to open his account. He's going to face the very first ball of the inning number 1 here. It's Hrithik Singh, Udhampur based. Hrithik Singh is operating with the ball. He's got a slip in place for Sahil. The only centurion of the tournament, that is Sahil Shafi on strike. The 2 informed lads or the batters in the middle, and look at Sahil Shafi. The first ball, the way he capped it out to mid-on, looks like in good touch again, trying to sweep the ball, and look at this lad, he's not going to appeal. Hrithik Singh, he knows that it's clearly going down leg, so no appeal there. There is nothing to worry about, and there is nothing to like that of making a statement here. That's a good shot, that's a flawless flow with flourish, and look at that one. He goes with that extension of arms. Once again, it was a same kind of a delivery, but a shot on that occasion, and easy pickings for Sahil Shafi. Rather opish one in the end, and that's gone down to the wideish of mid-on area for a 4. A cracking shot to open his account. He used 3 balls to open his account here. Open it up a bit. He's on to 4 now. It's 10 for none into the double figures, losing their much needed quarterfinal this afternoon and late evening at Pulwama in RPL, Royal Premier League, and here they are in action after winning 3 games. This is their last game in the pool, and 4 teams will qualify from each pool. Just 2 teams will be knocked out, one from Pool A and the other one from Pool B. This is the second over. Hrithik Singh is bowling. We lost the ball there, and it's the new ball in play now. And Hrithik has got the new ball in his hand now. It's the second over, just the second over. 10 for none. Sahil 4, Zishan 6. Are we in for a crackerjack of a partnership? Will these 2 batters put on a show this evening? People in good numbers again here. Is Peyton there?
And Ritik can't believe. He's a bit lucky, even batter is smiling. Misread it completely with that long stride forward and is trying to stretch and lean in on it and trying to land on. He misread that one completely and couldn't land on it. That one coming into the batter, trying to block his bat flow and the speed of the bat. But he's gone wide of the man at mid-off inside the 30-yard. Then there was a man at long off who saved 2 runs for his team. And we're done with the second one. It's 12 without loss. Talking about the two openers, their form is nice at the moment. They're middling the ball properly. The one that drifted away that did surprise Sahil Shafi. On majority of occasions this tournament we have seen that Sahil Shafi is not just anchoring the innings. He is there to stand tall for his side. He's standing tall. He step up to the occasion. Scoring 100. The quickest 50 is also under his belt against his name in the tournament. 12 with a loss after 2. And look at the shot for LBW. Unable to impress Ravi Kumar Chaurasia, the strike umpire right now there. And the sorrow is the scaling umpire in today's game. The TV umpire, Mr. Shaukat Madi, trying to go through that mid-on area. Unable to find the meaty part of the blade. Doesn't time it properly. But that one, that's gone high up in the air. And it's gone into the crowd for 6. Zishan Ali breaks free on to 12 now. Anything short, anything wide, anything like that of half track, he's going to pounce on it. Here's an example of that. Sends it packing. Knelt down on one knee. That is his trademark shot. He's very strong there. And if there is good bounce on offer, he's going to punish you. The only thing that's going to tease and unsettle this lad, you have to bowl in the right areas. The other thing is that the low bounce may tease him a bit. But this one, there is an opportunity. Did it carry? Ram Dayal at mid-on was an easy one. And Zishan Ali, he isn't satisfied with that one. I think to his satisfaction, it is sent upstairs. They can ask the TV umpire to assist and look into this one. He isn't confident at all. The batter looks that there is something fishy and he don't want to leave. He want a check here. So TV umpire will look into this one. And they're going to look into this one and they're going to introspect. The TV umpire will have to look into this one from different angles. We do have the different angles available. We'll find it out. And Zishan, he straight away looked at the strike umpire and asking him, I want a check. You have to look into this one. Difficult one. This is going to be interesting call as TV umpire and his experience will come into act here and into action here. The two batters in the middle, Sahil Shafi and he's got Zishan Ali. It's a right and left hand combination. They're taking time. They're taking time. They're going to look into this one again and again. They're checking it. Deep check is going on. As it is the important one. And the call isn't easy to make. You have to go through different angles here. You have to watch it properly. Something needs to be under the ball there.
So that goes in favor of batter in the end. He survives and Zishan Ali sent it upstairs. He asked the strike umpire to look into this one, and Ramdayal thought that there was something under the ball. But TV umpire going through different angles, and you know that they have the different angles available, and the camera work has been so fine and the finest in the tournament. There was something, he felt that ball is in contact with the turf. But look at the next one. One is you have to shorten the length, you have to lower the pace. That will help you against the likes of Zishan Ali. He's a pace lover. If there is good bounce on offer, he's gonna go after you. When you try to take that pace off, roll fingers over the ball, or try to look for that, you go with those ones where the ball is gonna turn. If you look for those patches, and if you want to hit those patches, that those patches can really dent to the confidence of Zishan Ali. The other thing is lower the pace. The other one is to look for that drift and turn of the surface. There are some of the patches I saw the rough is developing on this portion, and on the other portion I have seen that I was there before the time of the toss to look into this one, and there were some of the areas I saw that they are now breaking down, and if bowler hits the right areas, he can really dent to the confidence of Zishan Ali. But on the other side, if there is a good bounce and offer, Zishan will pounce on that. He is so comfortable when it comes to the good bounce and carry on the surface. Anything lower the pace, anything which keeps low, that's going to work for you. Take a look again. That one, they're again going through this one. And look at Zishan. He was confident that there is something. So he decided to hold back. He was back to the safety of crease. He thought that I'm okay, I'm fine there. A good call in the end. Going through different slide as the TV umpire there, Shaukat Mehdi. Finally, he thought that there is a ball in connection, in contact with the turf. That's gone. That's what I was talking about. That's what I point out, Nazir. Anything short, anything in his arc and zone, he's going to punish. He's going to take you on, and look at that one that flies all the way for a maximum. And that's the beauty of Zishan Ali. Look. Whenever the ball is going to bounce, whenever it's going to rise a bit, he's going to be there to punish. But something, look at that. That's what I was talking about. Drift and turn, and sometimes the quickness of the surface. When it hits those patches, the ball is going to go quicker towards the batter, and sometimes it's going to leave the batter. And that is the only thing that's going to come into equation that can dent to the confidence of Zishan Ali. अच्छी बल्लेबाजी ज़ीशान अली द्वारा 25 बने हैं चौथा ओवर, और यहाँ कैच सीधे विकेट कीपर ने लपक लिया है। ऋतिक सिंह मिलती हुई सफलता दिलाई यहाँ अपनी टीम को, और पहला विकेट ज़ीशान अली जो कि आक्रामक शैली से बल्लेबाजी कर रहे थे, अंततः अपना विकेट गंवा बैठे। ऋतिक सिंह ने यह सफलता दिलाई और यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने पहला विकेट गंवाया ज़ीशान अली के रूप में। और यहाँ पर किनारा और सीधे विकेट कीपर के पास अंदरूनी भाग लिया था बल्ले का गेंद ने, और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में। पहली विकेट हिलव्यू राजौरी को मिलती हुई उत्साहवर्धित सभी खिलाड़ी क्यों न हो, ज़ीशान अली घातक बल्लेबाज, और वो सफलता मिल चुकी है। जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। चौथा मुकाबला पहली पारी यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर की टीम बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतने के बाद साहिल 6 पे ज़ीशान अली का विकेट मिला हिलव्यू राजौरी को, और 3.3 ओवर में 25 रन बने हैं। थोड़ा सही दिशा और लंबाई पे गेंद। ऋतिक सिंह की अगर बात करें, बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म बहुत ही बेहतरीन है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 25 पे 1 विकेट उन्होंने दिलाया। पहली गेंद पर छक्का, फिर डॉट, और फिर अगली गेंद पर उन्हें विकेट मिला। तो अब तक उनका जो विश्लेषण है 1.3 का 13 रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी, शुरुआत में ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम हिलव्यू राजौरी को। नंबर 3 पे अब देखना होगा किस बल्लेबाज का चयन किया गया है। तफजुल नज़ीर, एक नए बल्लेबाज का चयन किया गया है, तफजुल को भेजा गया है। और पहली गेंद बड़े आत्मविश्वास के साथ कवर्स में खेला बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 25 पे 1 चौथा ओवर। तफजुल और साहिल की जोड़ी
हालांकि तफजुल अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता में यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए। ऑन साइड में खेला जरूर था पर सीधे फील्डर के पास, और अच्छी मानसिकता और अच्छी रणनीति के तहत यहाँ साझेदारी बिल्ड करनी होगी, एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड करनी जरूरी इस समय टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स को। एक और अच्छी गेंद वापस बॉलर की दिशा में, सम्मान दिया, आखिरी गेंद पर रन नहीं आया। ओवर की समाप्ति 4 समाप्त, यूनाइटेड इंपोर्ट्स 25। एक विकेट पे जीशान अली अपना विकेट गंवा चुके हैं और जीशान के बाद तफजुल का इस्तेमाल किया गया है। और देखना होगा क्या खालिद भट्ट आज टीम लाइनअप में है अथवा नहीं। 4 ओवर की गेंदबाजी 25, एक विकेट। ऋतिक सिंह ने 2 ओवर में 13 रन दिए। वहीं पे 2 ओवर की गेंदबाजी अन्य गेंदबाजों ने। हिलव्यू राजौरी की टीम पहली जीत की तलाश में, हालांकि एक जीत क्षमा कीजिएगा वो अर्जित कर चुके हैं, ये दूसरी जीत होगी और 4 अंक हो जाएंगे अगर यहां से जीत अर्जित करते हैं। और वहीं पे यूनाइटेड इंपोर्ट्स चाहेगी कि वो सभी मुकाबले अपने पूल से जीत करके सर्वश्रेष्ठ रहें। ये आखिरी मुकाबला दोनों टीमों के लिए इस पूल में, अगर लीग मुकाबलों की बात करें। 25 पे 1 4 के बाद 5वें की शुरुआत। अंकुश बंद्राल का चयन, परिवर्तन किया गया। छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल, अच्छी मानसिकता यहाँ कप्तान की। और एक विकेट और चाहिए। यूनाइटेड इंपोर्ट्स के पास बल्लेबाजी नंबर 2 नंबर 10 तक है, तो ऐसे में वो सेट होना नहीं दे जा रहे हैं यहाँ बल्लेबाजों को। और जितना वो बेहतर तरीके से गेंदबाजी करवा पाएंगे उतना बेहतर रहेगा। यहाँ गैप में खेला है, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहाँ। और इस चौका के साथ रन संख्या में वृद्धि। अंकुश बंद्राल बाएं हाथ के एक और लेफ्ट आर्मर। खूबसूरत स्ट्रोक था साहिल का, गजब के फॉर्म में है साहिल। शॉट सिलेक्शन उनका बहुत बढ़िया अब तक रहा है इस टूर्नामेंट में। 4 और बटोरे, 29 पे 1, 5वें ओवर की गेंदबाजी। बख्शी स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान जहां पे ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। ये ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक है, पीछे फील्डर है नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां पर साहिल के बल्ले से, 2 चौके अंकुश बंद्राल के विरुद्ध। अच्छी बल्लेबाजी, खूबसूरती के साथ, और पावर प्ले का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जीशान अली 19 बनाए, साहिल 14, तफजुल नजीर 0। आने वाले बल्लेबाजों में हुरैर सोफी, फैजान, जामिन आशिक, फैजान रूप, शाहरुख डार, अफान वानी, ओवैस रजाक और सजू। खालिद भट्ट आज टीम का हिस्सा नहीं है और तफजुल का इस्तेमाल किया गया आज टीम में, उन्हें जगह मिली है। 33 पे 1, 4.4 के बाद 5वां ओवर। अंकुश बंद्राल का चयन, एक सिंगल दौड़ लेंगे वहां पर, हल्के हाथों के साथ उसको खेला, 1 रन और। अच्छी मानसिकता, अच्छी रणनीति, पर कोशिश यहां पर एक विकेट की। हालांकि 1 विकेट जरूर मिला है जीशान का, पर उसके बाद से तफजुल आए हैं। हालांकि खाता खोलना बाकी है। 3 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं। साहिल 15 पे 11 गेंदों से। अंकुश बंद्राल क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हैं। इस बार धीमी गति की गेंद, स्ट्रोक थोड़ा जल्दी ऑफर किया है पर वो संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे बीट करते हुए बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति 5 समाप्त, 34 पे 1। 6वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 136 प्रोजेक्टेड स्कोर इसी वर्तमान रन गति से, पर आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। पिछले 1-2 मुकाबलों से मुजम्मिल फैरोज को भी जगह नहीं मिली है। 34 पे 1। वो पहला मुकाबला खेले थे, दूसरे मुकाबले में वो दिखे नहीं, तीसरे मुकाबले में भी वो दिखे नहीं, और आज अंतिम मुकाबले में अपने पूल से जो यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम ये आखिरी लीग मुकाबला खेल रही है पूल से, 3 जीत अर्जित की है। कुछ नए चेहरों को जरूर अवसर दिया है, तफजुल नजीर जिनमें एक है। जानते भी हैं उतना दबाव है नहीं क्योंकि 3 मुकाबले लगातार वो जीते हैं, तो इसमें एक अवसर जरूर दिया है अपने युवाओं को। तफजुल नजीर सामने ऋतिक सिंह। ऋतिक ने अब तक 2 ओवर में 13 रन, 1 विकेट, ये उनका 3रा ओवर है, पारी का 6वां ओवर, और 5.1 में 34, 1 विकेट पे 6.58 करंट रन रेट। ऋतिक सिंह एक चतुर गेंदबाज है,
लगातार लेगो मिडिल पे गेंदबाजी 34 पे 1, छठे ओवर में साहिल 15 पे और 1 रन और तो 16 पर पहुंच गया। तफाजुल सामने, खाता खोलना बाकी पर यहां बड़े बेहतरीन तरीके से गेंद को स्टैंड्स में जा पहुंचाया और खूबसूरत अंदाज के साथ ये 6 अर्जित किए, खाता खोल लिया इस छक्के से। 5 गेंदों से 6, एक खूबसूरत स्ट्रोक था और वो भी ऋतिक सिंह के विरुद्ध। ओ कमाल का स्ट्रोक, बेहतरीन, शानदार और काफी देर हवा में लहराई गेंद। पर यहां सामने की ओर लॉन्ग ऑन पे एक और चौका, एक और दर्शनीय स्ट्रोक। तफजुल नजीर सचमुच ये नजीर है, कोई जवाब नहीं, अबे मिसाल है। ये देख लीजिए सामने, खूबसूरत और शानदार ये स्ट्रोक। 4 रन और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि। रन संख्या पहुंच गई 45 पे, 5.5, 1 विकेट। ऋतिक के इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं। 5 गेंदों से अंतिम गेंद का आना बाकी और एक बार फिर गेंद की पिच तक पहुंच रहे थे। अच्छी मानसिकता कि जानते हैं इस विकेट पे स्पिन गेंदबाजों ने अच्छा खासा परेशान किया है, तो फिर अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। गेंद की पिच तक पहुंचना, गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करना और गेंदबाज को पढ़ना, ये मानसिकता बल्लेबाज की आपको और महान बनाती है। एक बार फिर स्टंप्स को कवर किया, एक कदम आगे निकला, बैट और पैड क्लोज करते हुए सामने की ओर खेला। एक बार फिर रन नहीं मिला। ओवर की समाप्ति 6 समाप्त, 45, 1 विकेट पे यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर। Tafazul on to 10 into the double figures. Hrithik bowled 3 overs. He's done with his third one here. It's 24 for 1 of his 3. Sahil Shafi is on to 16. Talking about the two teams, if we go through Hillview, they have Saurabh Daliwal in the lineup, Ankit Das, Rohan Cole, Hrithik Singh, Anuj Kumar, Ankush Bandral, Punit Kumar the captain, Gaurav Chaudhary, Suryansh Raina, Umar Lefty Ram Dayal, and Saurabh Daliwal is in the lineup. Saurabh, the first wicket falling at the score of 25. It was over number 4, ball number 3, where we saw the backup Zishan Ali. Ball was used by captain. So far it's Gaurav Chaudhary 2 was none for 12. Hrithik Singh. Ankit Das is Ankit Debas is brought into the attack, the new one to operate. Chaudhary 2 was none for 12. Hrithik 3 was 1 for 24. Ankush Bandral 1 over none for 9. And Ankit Debas is going to bowl. DABS. Debas is going to bowl 45 for 1. Tafazul showing some application and admire to quality shots. Sahil is picking the ball very nice. He's reading all the bowlers nicely here. He has that composure, the compatibility, adapting to the conditions here. 1 for 46, 7th over we are in. Ankit to continue and carry on. Tafazul, Nazir on to 10. Fearless. Flighten off a driven straight like an arrow. Look, he's trying to go through that V. He's eyeing and trying and finding runs in that V, mid-on and mid-off area. That makes him special character. He's going with a straight bat. He's trying to be perfect and he's trying to attain that and trying to execute the plans to perfection. He's executing in a well-fashioned and manner here. He's designing that pattern of his knock. Sahil 17 and Tafazul 11. 48 for the loss of one halfway mark in over number 7. Ankit in his very first over. There is a short fine leg and a short third in place. This time he used up the foot there. And long on is in place. Just a single. But showing that intent on turf wicket. That is so nice from Tafazul. He's stepping out. Playing it straight through the line. 1 for 49.
Seventh over, we're in little adjustment in the field. The man who was at fine leg is asked to stay a bit wide. And that one is going to roll past. Big chase for man. Will he get there? Ball stopped a bit in the outfield because of that sluggish. It's a sluggish outfield, and because of that dew which settled in, it looks like that it's going to slow up a bit, and that dew is going to play its part. That's why it's looking slow at the moment. It's going to get slow, and at times it's going to look sluggish. That one could be tight. Good running between the wickets was an easy one, but good running between the wickets again. So quick. Tafazul, he was ready to respond. There was a call, and it was Yaya from Tafazul. 53 for 1. 7th over we are in, and you are watching JK Sports Time Facebook. Moreover, JK Sports Time YouTube. Red FM JK. One down. The first wicket falling at 25. It was ball number 3 of over number 4. That's gone for runs here. Into the mid-wicket boundary. Tafazul. Newly induced batter today. He's got his place in the playing 11. He finds his place. Trying to fit in. And he's on his very first. Okay. He's got an opportunity here. And this is the first opportunity for this lad. He's trying to grab it here. And for the first time, he's batting here for his team, United Imports. He's trying to grab that opportunity with both hands. He's trying to make it one big knock here. Is he going to carry on and continue? His first outing for his team. Maiden outing here at this very center. And this is called grabbing that opportunity with both hands. On to 19 in no time. Long way to go. Job isn't done. Looks like he's going to look positive. He's looked positive straight away. Showing that application, that decent approach with the bat and the decency in his. And he's attacking the bowlers here. He's looked so positive. The beauty about the batter is he's timing the ball to perfection. He's stepping out. His foot movement is so nice. That's lifted up. There is a man, but he is out of equation. It's gone beyond the boundary line. Couple of yards beyond the boundary line. Wide-ish mid-off area for a 6. Lifted up by Sahil Shafi. In no time, ball goes past. Oh, look at that shot. Delicate and delicious too. Lovely, lovely shot. As a batter, you love to be part of that kind of a shot, and it goes all the way for a maximum. 63 पे 1.7 के बाद साहिल 25 पे 17 के से तफजुल नज़ीर 16 पे पर क्या बेहतरीन पारी के लिए 172 प्रोजेक्टेड स्कोर 8.59 प्रति ओवर के हिसाब से रन गति पहली गेंद पर छक्का वो बेहतर स्ट्रोक था साहिल के बल्ले से निकलता 25 पे वो आबाद है सम्मान दिया खूबसूरती के साथ वापस बॉलर की दिशा में फॉरवर्ड डिफेंसिव अंकुश बंदराल दूसरा ओवर अपने कोटे का 8वां ओवर पारी का यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए इस समय हिलव्यू राजौरी द्वारा इस गेंदबाज की ओर से एक सिंगल मिल जाएगा पीछे खिलाड़ी तैनात हैं और जब तक वे गेंद को फील्ड करते थ्रू करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास रन लेने का अच्छी शुरुआत हालांकि जीशान अली ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए वो अपना विकेट गंवाए बैठे लेकिन उसके बाद तफजुल नज़ीर आए हैं साहिल के साथ 26 पे साहिल और तफजुल 16 पे अंकुश बंदराल अच्छी गेंदबाजी ज़्यादा गति नहीं देते हैं और ज़्यादा उछाल है भी नहीं एक रन और मिल जाएगा अच्छी रणनीति सिंगल डबल के साथ साथ बड़े स्ट्रोक भी आ रहे हैं तो एक बेहतर तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है जब कभी भी ख़राब गेंद मिली है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया है साहिल और तफजुल ने 65 एक विकेट पे 7.5 8वां ओवर यहाँ एक विकेट की तलाश ललचाना होगा बल्लेबाज को ऑफ स्टंप से बाहर कट किया गेंद को पीछे फील्डर तैनात सिंगल मिल जाएगा आखिरी गेंद पर ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 एक विकेट पे
तफजुल और साहिल अच्छी बल्लेबाजी की है। इस मैच में तफजुल को आज पहली बार अवसर मिला है, उनका चयन हुआ है इस टीम में, तो उस अपने स्थान को पक्का करने के लिए निश्चित तौर पे एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी। और इस समय 17 पे नाबाद है, 12 गेंदों से 21 गेंदों से साहिल ने 27 बनाए हैं। जी के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 second edition presented by Athwas Retail, Athwas with confidence। जे के सुपर सीमेंट, नए ख्वाब नए इरादे। जे के सुपर सीमेंट के साथ बनाए एक मजबूत कश्मीर। रामदयाल नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। साहिल 27, तफजुल नजीर 17 पे। यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर 66 पे 1, 8.25 ये करंट रन रेट टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स की। पर यहाँ से एक और अनुभवी गेंदबाज को लेकर के आराम दयाल को, और दयाल के पास अच्छा खासा अनुभव है, तो पिछले मुकाबलों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, पर यहाँ इस मैच में अवश्य है और भी बेहतर प्रदर्शन करने की, अपना 100% देना होगा, क्योंकि हिलव्यू राजौरी को जीत चाहिए इस मैच में। हर हाल में वो जीत तलाश रहे हैं। यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम भी एक और जीत के साथ अपने लीग मुकाबलों की समाप्ति जीत के साथ करना चाहेंगे इस पूल ए में। और संभवतः पूल बी में, पूल ए में रॉयल गुडविल, सुल्तान सोपोर स्टैलियंस, स्पेक्ट्रम किंग्स और अथवास इंडिया 11। तिरछे बल्ले के साथ को गाइड किया गैप में, पीछे फील्डर, पर जब तक उमर लेफ्टी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, कुछ रन जरूर बटोर लिया बल्लेबाजों ने। 9वें की शुरुआत। रामदयाल पहली गेंद पर सिंगल, और दयाल की बात कर रहे थे, एक अनुभवी गेंदबाज है, हालांकि साउदर्न पवेलियन एंड से उन्हें गेंदबाजी का न्योता दिया गया है, तो देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाएंगे, क्या यहाँ इस साझेदारी को तोड़ने में सफल हो पाएंगे, कि एक सफलता अर्जित कर पाएंगे अपने लिए, अपनी टीम के लिए। तफजुल इस बार हवा में है गेंद, उस और खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, एफर्ट था पर पहुंचे नहीं, पलट कर दूसरे रन के लिए टॉप जरूर लगा था, हवा में उछली गेंद जरूर थी। रामदयाल निराश जरूर, वो निराशा उनके चेहरे से झलकती हुई। ये काफी ऊपर हवा में गई थी, उस और फील्डर ने दौड़ लगाई जरूर थी और नहीं पहुंच पाए, उस कैच को लपक नहीं पाए। थोड़ा मुश्किल जरूर था ये कैच। 67 के बाद 69 पे 1, 9वें ओवर की गेंदबाजी। तफजुल 19 पे। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी अपने पहले ही मुकाबले में, कॉन्फिडेंस दिखाया इस बल्लेबाज का। पैड पे और उंगली फिजा की, और रवि कुमार चौरसिया, कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई रवि कुमार को यहां तफजुल नजीर को एलबीडब्ल्यू करार देने में। दूसरा विकेट। और हम बात कर रहे थे क्या रामदयाल उस अनुभव का प्रयोग करते विकेट दिला पाएंगे, और उन्होंने अपने कप्तान के विश्वास पे खरे उतरते हुए और बिल्कुल स्टंप्स के सामने, और अंपायर रवि कुमार ने आउट करार दिया और इस प्रकार से विकेट मिला। तो दयाल को अंततः वो कप्तान का विश्वास जीतने में सफलता दिलाई। दूसरी विकेट मिली हिलव्यू राजौरी को। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स की अगर बात करें, दूसरा विकेट तो तफजुल के रूप में, तफजुल ने लगभग 19 रनों की एक पारी खेली, पर उस पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। निराश कदमों के साथ वापस लौट रहे हैं डग आउट, क्योंकि वो अपना विकेट गंवा चुके हैं। 69 पे 2, 8.3 के बाद रामदयाल अपने पहले ही ओवर में 3 रन दे करके विकेट उन्हें मिला है, और अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी। 8.12 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम, और काफी हाई वॉल्यूम में जो ये संगीत चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, और काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं पूरे जितने भी व्यक्ति हैं हमारे आसपास, और निश्चित तौर पे काफी इरिटेटिंग है ये, डिस्टर्बिंग सीन से जरूर है। चलिए 69 पे 2, 8.3 के बाद अफान वानी, एक और युवा बल्लेबाज अफान वानी, और टीम के कप्तान भी है जहां तक यूनाइटेड इंपोर्ट्स का सवाल है। रामदयाल 1 विकेट की खुराक लेने के बाद एक और अच्छी गेंद, बेहतर गेंद मिश्रण करना जानते हैं रामदयाल, अनुभव उनके पास है, और जानते हैं कि कैसे इन परिस्थितियों को कंट्रोल में रखना है, इन बल्लेबाजों के विरुद्ध कैसे शिकंजा कसना है, ये जानते हैं रामदयाल। पर बल्लेबाज काफी अनुभवी,
वो अफान वानी वो साहिल हो, एक शतक साहिल के नाम है इस प्रतियोगिता में। मात्र एक ऐसे खिलाड़ी यूनाइटेड इंपोर्ट्स के साहिल शफी जो शतक लगा चुके हैं इस प्रतियोगिता में। ये तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया, दिशा दे दी, पर पीछे थर्ड मैन है। रन संख्या जरूर बढ़ेगी वहां पर एक रन के साथ। 69 से जाके 70 पे 2, 8.5 आखिरी गेंद इस ओवर की। साहिल 28 पे, अफान वानी 1 पे। 2 विकेट अब तक तफजुल नजीर और जीशान अली, पहले विकेट के रूप में जीशान, दूसरे विकेट के रूप में तफजुल। अफान वानी और साहिल बीच मैदान में 70 पे 2। इस बार लेग स्टंप की शेद में दिशा और लंबाई पे नियंत्रण नहीं, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। एक बार फिर रवि कुमार का। रन संख्या में वृद्धि होती हुई 71 से बढ़कर 72 पे 2। 9वें ओवर की गेंदबाजी। अभी भी इस ओवर के बाद 11 ओवर आने शेष है। 170 180 अवश्य इस विकेट पे। हमने देखा पिछली पारी में सुल्तान ने भी 186 रन बनाए थे, तो थोड़ी दूसरी पारी में काफ़ी दिक्कत हुई, चुनौती रही और स्पेक्ट्रम ने वो मुकाबला हारा। या 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े और वो सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया जब तक पवन निर्वाणी आकर के गेंद को फील्ड करते। समय 1 रन लेने का, 1 रन और खाते में। 9 के बाद 72, 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। 11 ओवर का आना बाकी। रामदयाल 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, अफान 1, साहिल 29। Thank you, Nazir. 11 overs are going to come. Afan is in at number 4. Afan is yet to unleash in the tournament. He's not having those days with the bat. With the ball, he's doing his part, he's playing that part. But with the bat, he is known for with the bat to great extent, and people know him as a terrific opener and one down batter. Today he walks in at number 4. Little demotion down the order. He's in at number 4 now. We are into the 10th over. There is a little change in batting order today, but Sahil is coming in at number 1. That's the good sign, alongside Zishan Ali. He's working as an opener nowadays, and they're going to look for the second, going to try hard, and he's safe. He's okay there, no problem at all. Pushing for the second run and pushed hard. Good running in the end. Sahil Shafi. He's the top run getter of the tournament, and these runs will help them to cross that 200 mark. Earlier this afternoon I saw he was the highest run getter with 166 in 3 games, and today's 32 will make it 198. So he's 2 runs away from his 200 mark, and this is the 4th outing for Sahil Shafi, including 100, and he's also quickest to his 50. Afan is trying to get ready to face the next one. This is the 10th over we are in. The stage is set again. They're going 7.89 in over. 150, around 160 is going to be good score. A score where your bowler and the bowling unit can feel they have something to bowl at. Once you cross the mark of 141.50, it means you have extra bit of cushion, given the circumstances and the surface here at Bakshi Stadium. Now decided to go downtown. That's aerial. Is it beyond the boundary line? Yes, it is. There is another 6. Gigantic to me. Moves to 38. It is Sahil Shafi, the highest run getter. Goes past 200 now in the tournament. This is the 4th outing, the 4th match for Sahil Shafi. Got 100 in the tournament, scored quickest 50, and now he's launching again. He's on a launch pad here. Oh, look at that. Step out. Up to the mark. Got to the pitch of the ball and launched it.
Aerial it goes into the night sky. Look and watch that again and again. Wow. He's got the power. He's a powerful batter. Sahil Shafi on to 38 of 27, 82 for 2. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Driven straight to long on. A single is up for grabs. The two batters going to respond. And it's time for drinks 10 done. Halfway mark 83 for 2. Afan 2 of 3 balls. And Sahil is on to 39 of 28 balls. Banai Mazboot Kashmir Bull Strong. And these are the sponsors of tournament. Athwas Retail, Athwas with confidence, and JK Super Cement, the title partner, and powered by Athwas Retail, Athwas with confidence. Thanks to the sponsors of JK Sports Time, Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pampur Amateur Multi-Brand, Rafivani, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, Just Bukhara. Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, H&D Complete Kidswear near Natipura, Srinagar, and Fashion Fiesta. 2 for 83 after 10 hours, halfway mark. Time for drinks. Players getting hydrated. Management, they know that it's a must-win game. Take a look again. Afan Wani, Faizan Sahil, Shahrukh Dar, Zamin Ashik, Zishan Ali, Urvas Razak, Sajju, Faizan Roof, Horair Sofi, Tafazul Nazir, Hillview, Puneet Kumar, Ankush, Anuj Kumar, Ramdayal, Rohan Kaul, Suryansh, Uma Lefty, Garo, Ankit, Debas, Ritik Singh, and Saurabh Dhaliwal. And this is their side, the two squads on your screen right now. You can go through again and again and watch that. It is on your screen right now. Drinks time in the middle. They're getting that breather. They needed that. The coach is in the middle. He's having words with his pack. Little smile that is on their face at the moment. But Ram Dayal looks concerned. Little grim on his face. He knows that it's a must-win game. It's going to be a tight competition, a stiff one. They need to win this one at any cost. These are the officials there. The TV umpire and the two on-field umpires in today's game. The best in the business. And there is Mudassir also joining them. The outfield is okay, but at times it looks sluggish in some areas. It looks slow in some areas. Slower at times because of that dew which is settling in at the moment. It's a day-night encounter. And this one is going to carry on till late night. We have 10 overs to come from inning number 1 and 20 from others. So 30 overs remaining. So it's going to be a long way into the night. Long way. 2 for 83, 10 overs done. United Imports lost 2 wickets. Zishan Ali and Tafazul. His first outing in the tournament. He got a call. Grab at that opportunity. Scoring 19. Quick fire 19. Couldn't convert. Can't convert this one into a substantial one. But to some extent, the intent was there. Getting a call, he responded. The way he sported. Sahil in the middle, it looked like that he's trying to ease up his nerves. He did that to some extent for a while. In no time, scoring 19 and going back to pavilion. JK Sports Time Facebook, JK Sports Time YouTube, moreover Red FM JK YouTube bringing you the ball-by-ball commentary from iconic Bakshi Stadium. Punched up the back foot again.
Not 4 runs this time. This is over number 11. How United Imports will approach the next passage of 10 overs, how they will operate, what kind of batsmanship they're going to display in the next 10 overs. That remains to be seen. Good shot on dry comes into play straight down the ground. Wanted second and won't get that, as there is Frilo who's so quick onto the ball. From each pool, 4 teams will qualify. It's a league-based tournament. 10 teams participating. From each pool, one side will be knocked out in the group stage. Then we will be having Super 8 coming up. Trying to go with a straight bat and is surprised by Ramdayal. There is extra bounce and ball rising on that occasion. It did rise. Batter had no other idea. Trying to stay inside the line of the ball, getting that bat out of the line in the end. Afan Wani with bat unable to impress anyone here, unable to express himself, but this time round a quality shot comes into play. That's gonna be runs, 4 of them into the point boundary. His eyes lit up and puts that one away. Square cut comes into play. Brilliance from Afan this time. Today he has to find some runs here, as he struggled over the past couple of days with bat. Little aerial and upish, but there is going to be protection, just a single. This is Red Premier League Season 2 and it is match number 14 unfolding here at iconic, historic, beautiful, elliptical Bakshi Stadium, where 2 teams are fighting it out. One, that is Hillview. It's must-win game for Hillview United. They're already into the quarterfinals, winning 3 on the trot. They qualified. They're into the second stage, the next round. That is the quarterfinal. Hillview has to fight it out. Fall of wickets, first at 25, second and 69. Look at the partnership for the second wicket. That was so nice and excellent between Tafazul and Sahil Shafi. The experienced led 5 bowlers being used by captain Puneet. He used Garo, who bowled 2 was none for 12, economy of 6. Ritik Singh, 3 was 1 for 24, economy of 8. Ankush Bandral, 3 was none for 29, economy of 9.67. And Ankit Debas, Umar left need 2 wickets to complete 500 wickets on Cricket Heroes. That's going to be another achievement. Ankit Debas 1 over none for 12, economy of 12. Ramdayal 2 was 1 for 13, economy of 6.50. Impressive in shorter format. Umar lefty for the first time to operate. Pulled underarm pull comes into play. Just a single. Sahil, he's enjoying his batsmanship. He has crossed the 200 mark in the tournament. The highest run getter of Red Premier League Edition 2. Scoring 100. Quickest 50 under his belt. He scored 100 in other game. Oh, look at that one. That's beauty. And is given out, caught behind, and look at the celebration from Umar lefty straight away. He draws the blood and Afan Wani is on his way. Pinpoint accuracy, bounce and carry. Look at that. It kissed the blade on way to wicketkeeper. Take a look again. And this one is going to be the clear view. And this will tell us the clear picture. Look at that. Absolute beauty. Extra bounce. It did rise. And Umar lefty telling him you have to walk away. So wicket number 3 down.
And this partnership didn't last long, but a good one for Hillview. They needed that breakthrough badly. Look, he's telling his partners there. There was extra bounce. It kicked off the surface. It hurries, and I was unable to respond in time. So the wicket number 3 falling at 91. This is the 12th over we are in. The batters yet to come. It's Horair in at number 5. And after Horair, there is going to be Faizan Zamin Ashik, Faizan Roof, Shahrukh Dar and Obais Razak, then Saju. Faizan Roof got stitches on his left hand. He's in playing 11 today. Interesting. And looking at the Hillview Rajouri, their experience, there's some of the big names in the lineup. Some of them played domestic level cricket and are part of Hillview in today's game. Puneet Kumar is the captain, Ram Dayal, Rohan Cole, Suryan Shirana and Gaurav Chaudhary is there. And in today's game we saw the Ritik Singh, the Udhampur boy, finds his place in 11. Solid block from Horair, walked in and keeps it away. 3 for 91. This is over number 12. 91 पे 3, 11.3 ओवर लेफ्टी 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं 1 रन दे करके, और 1 विकेट और चाहिए तो 500 विकेट का श्रेय प्राप्त करने के लिए एज पर क्रिक हीरोज। बहुत बड़ी उपलब्धि, अच्छी गेंद थी, एक बार फिर आवश्यकता के गलियारे में, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उमर लेफ्टी द्वारा। 91 पे 3, 11.4 ओवर की गेंदबाजी में साहिल 42 पे 32 गेंदों से। होरैर सोफी अभी अभी आए हैं, 1 रन जरूर बनाया उन्होंने 2 गेंदों से। बेहतर गेंदबाजी अभी तक हुई है हिलव्यू राजौरी द्वारा। विकेट 3 ही मिले हैं, पर कोशिश जरूर उनकी कि यहां से विकेट प्राप्त करें और रनगति पे भी अंकुश लगे, और कम से कम लक्ष्य तक रोकें जरूर यहां टीम को। और सामने की ओर उस ओर खिलाड़ी तैनात हैं, लॉन्ग ऑन पे सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में। अच्छी रणनीति और एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करनी होगी यहां हिलव्यू राजौरी को, क्योंकि आवश्यकता भी है। आपको विकेट चाहिए, सही दिशा, सही लंबाई, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। उमर लेफ्टी एक बार फिर पैड पे टकराई गेंद पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई, लेकिन हल्का सा प्रश्न पूछ रहे थे पर अंपायर ने उसको स्वीकारा नहीं। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर में 3 रन 1 विकेट। शुरुआत बहुत बढ़िया उमर लेफ्टी की अपने इस कोटे की, बेहतर गेंदबाजी की है, बिल्कुल एक सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है उमर लेफ्टी द्वारा। वो अवसर देने रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने के, ये उनकी क्षमता है, ये उनकी महानता है इस गेंदबाज की। दाएं हाथ से बल्लेबाजी, गेंदबाजी और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। 93 पे 3, 12 के बाद 8 ओवर का खेल शेष इस पहली पारी में। 14वां मुकाबला JK सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 presented by Athwas Retail, Athwas with confidence। JK सुपर सीमेंट नए ख्वाब, नए इरादे और एक नई सोच JK सुपर सीमेंट के साथ बनाए एक मजबूत कश्मीर, और मजबूती के साथ यहां यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर। 93 पे 3, 12 के बाद 8 ओवर का खेल बचा है। प्रोजेक्टेड स्कोर 155। उमर लेफ्टी 1 ओवर 3 रन 1 विकेट। नए गेंदबाज का चयन, एक और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज का इस्तेमाल, उससे पूर्व हालांकि उन्हें अवसर नहीं मिला था गेंदबाजी में। सोहराब अब आए हैं गेंदबाजी में, खूबसूरत गेंदबाजी एक्शन के साथ, पर यहां सिंगल जरूर मिल जाएगा जब तक ऋतिक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते। 94 पे 3, 13वें ओवर में होरैर सोफी सामने 1 पे, और साहिल ने 44 बनाए, एक और अर्धशतक की ओर अग्रसर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, शतक उनके नाम। 44 पे नाबाद
और इससे पूर्व एक और पारी उन्होंने ज़रूर खेली थी। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं यूनाइटेड इंपोर्ट्स के, और उनकी बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी, ये महानता है इस बल्लेबाज की। छियानवे पे 3, 12.4 ओवर की गेंदबाजी। हुरैर सोफी 3-5 के दूसरे, साहिल 44 पे बाएं हाथ के। खूबसूरत और बेहतरीन गेंदबाजी ऑफ स्टंप के आसपास आकर। और देखिए सबसे बड़ी चीज़, एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी, क्योंकि ऑफ साइड में जो फील्डिंग घेराव करके रखा उसके अनुकूल गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने फील्डर है, थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास। यहाँ मिडल स्टंप पे थोड़ा वेरिएशन जरूरी। ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 97 पे 3, और सौरभ के इस ओवर में 4 रन मात्र आए। अच्छा ओवर एक बार फिर घटा। ये मानसिकता, ये रणनीति रहनी चाहिए यहाँ टीम हिलव्यू राजौरी, क्योंकि ज्यादा रन खर्चने नहीं है। पर अगर दूसरी ओर देखा जाए तो 7 विकेट सुरक्षित, आप 1-2 ओवर और इस पारी को ले जाएं, क्योंकि सेट साहिल हैं, हुरैर सोफी को दूसरे छोर से सहयोग करना है। और आखिरी 4-5 ओवर में आप, विकेट आपके हाथ में है तो बड़े स्ट्रोक अवश्य खेल सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं, गियर बदल सकते हैं, तो आप एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध। पर हिलव्यू को नियंत्रण जरूरी। उमर लेफ्टी एक और ओवर लेकर के, एक बार फिर थोड़ा शफल के जगह बना करके स्ट्रोक खेलना चाहते थे पर सफल नहीं हुए। उमर लेफ्टी के विरुद्ध हुरैर सोफी अब चांस लेते हुए 97 पे 3, 13.1, 7.37 का ये करंट रन रेट। हिलव्यू राजौरी बनाम यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर, जेके सुपर सीमेंट, रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025, presented by Athwas Retail, Athwas with the confidence। ये मैच नंबर 14, 1 रन और खाते में जोड़ लिया। उमर लेफ्टी की गेंदबाजी विश्लेषण देखिए, वो अनुशासन, वो पैनापन, वो किफायतीपन, वो कसी हुई गेंदबाजी। 1.2 ओवर की गेंदबाजी और मात्र 4 रन अभी तक खर्चे हैं, और 1 विकेट भी प्राप्त किया है। 98 पे 3। इस पर हल्का सा उछाल था पुल के ऑन साइड में, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर। खूबसूरत टाइमिंग, शानदार प्लेसमेंट और चौका बटोर लिया यहां बल्लेबाज साहिल ने। 4 और खाते में उमर लेफ्टी के विरुद्ध। खूबसूरती के साथ, बहुत ही बेहतर तरीके से, पूरा समय लेते हुए ये चौका बटोरा इस बल्लेबाज ने। 4 और खाते में जोड़ लिए, और साहिल की व्यक्तिगत रन संख्या पहुंच गया 48 पे 36 गेंदों से। ये सामने खेला है लॉन्ग ऑफ की, और सीधे बल्ले से बेहतर रणनीति सामने खेल रहे हैं, क्योंकि इस विकेट पे अक्रॉस द लाइन आप खेलेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और ये मानसिकता इस बल्लेबाज की अनुभव है उसके पास, और पिछले 3 मुकाबले इस विकेट पे खेले, 1 शतक भी लगा चुके हैं। और यहाँ 49 पे नाबाद, एक और अर्धशतक के नजदीक, 37 गेंदों से 49। हुरैर सोफी 5 पे, 100 रन पूरे होते 103, 3 विकेट के नुकसान पे 13.4 ओवर की गेंदबाजी। सामने हुरैर सोफी ऑन साइड में, एक सिंगल मिल जाएगा, और एक बार फिर स्ट्राइक साहिल के पास। अब तक क्या शानदार ये टूर्नामेंट रहा है, क्या शानदार सफर रहा है यूनाइटेड इंपोर्ट के बल्लेबाज साहिल के लिए। 1 शतक मात्र ऐसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के जिनके नाम शतक है, वो साहिल। और एक और अर्धशतक की, और 49 पे 37 गेंदों से 104 पे 3। पैड पे टकराई, स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से विकेट मिलता हुआ 49 पे 38 गेंदों से ये पारी समाप्त होती हुई। और एक बार फिर सफलता उमर लेफ्टी के नाम, और इस प्रकार से उमर लेफ्टी के 500 विकेट पूरे। ये 500 का कीमती मान रचा है, और निश्चित तौर पे कंग्रेचुलेशंस जिस प्रकार से उन्होंने ये संगमी लबूर किया। उमर लेफ्टी 2 ओवर 10 रन 2 विकेट, और इससे पूर्व 498 विकेट, और 2 विकेट और तो 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी की सब में शामिल, उस ताली में शामिल हो चुके हैं।
104 पे 4, 49 पे लौटे, 1 रन से चूके अर्धशतक। साहिल पर कमाल की बल्लेबाजी, जामिन आशिक अब नए बल्लेबाज। 104 पे 4, 14 समाप्त, 6 ओवर का खेल बचा है। 7.43 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है इस समय टीम यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध इस मैच में। और अच्छा क्रिकेट अभी तक खेला है क्योंकि पिछले तीनों मुकाबले उन्होंने जीते हैं, तो वहां से दर्शता है कि आपकी बल्लेबाजी, आपकी गेंदबाजी, फील्डिंग, ओवरऑल आपका प्रदर्शन कितना बेहतर रहा है इस मैच में। जोरदार अपील थी और अंततः स्वीकार कर लिया अंपायर ने। विकेट मिलता हुआ गेंदबाज उमर लेफ्टी को। 104 पे 4, जामिन आशिक अब नए बल्लेबाज सामने। और यहां पैड पे टकराई और लीजिए एक और विकेट। और पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर वो विकेट मिला था उमर लेफ्टी को, तब 49 पे साहिल छपी एलबीडब्ल्यू करार दिए गए थे। और नए ओवर की शुरुआत सोहराब का ये ओवर था, पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार दिए गए जामिन आशिक। जी हाँ बिल्कुल, और कोई हिचकिचाहट नहीं अंपायर रवि को आउट देने में। एक और विकेट का पतन होता हुआ 5 विकेट, और पिछली 2 गेंदों से 2 विकेट आए हैं क्योंकि पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर उमर लेफ्टी को विकेट और नए ओवर की पहली गेंद पर सोहराब दबास को विकेट। 1.1 ओवर 4 रन 1 विकेट गेंदबाजी विश्लेषण सोहराब का। और 14.1 के बाद 104 पे 5, यहां एक बार फिर वापसी और 2 विकेट हिलव्यू राजौरी को मिले और वापसी करती हुई उनकी टीम। 15वें ओवर में जाकर के एक और विकेट मिला, खाता भी नहीं खोल पाए वहां पर। क्षमा कीजिएगा, जामिन आशिक नाबाद है, ये साथी खिलाड़ी हुरैर सोफी चलते बने। अब जाकर के नंबर 7 पे ओवैस रज़ाक, दोनों नए बल्लेबाज 0 और 0, किसी भी गेंद का सामना नहीं किया, दोनों नए बल्लेबाज हैं, खाता खोलना दोनों को बाकी। पर यहां से एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर कि यहां से अब वो बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोक पाएगी हिलव्यू राजौरी की टीम। यूनाइटेड इंपोर्ट्स को यह देखना होगा क्योंकि 104 पे 3, 104 पे चौथा विकेट गिरा, फिर 104 पे 5वां विकेट। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ये क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। अगले पल क्या होने वाला कोई कल्पना नहीं कर सकता। सोहराब को एक सफलता मिल चुकी है और इस गेंद पर सिंगल मिला, 1 रन और 105 पे 5। 14.2 ओवर की गेंदबाजी। एक गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर हैं पर गेंद की गति खुद ब खुद कम होती हुई बिल्कुल बाउंड्री लाइन के 2 कदम अंदर रोक लिया, थ्रो किया, पर दोनों बल्लेबाजों के पास समय था संभवतः 2 रन लेने का। और 2 रन और खाते में। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर 49 पे साहिल गए थे, नए ओवर की पहली गेंद पर हुरैर सोफी चले गए, तो 104 पे वो 2 विकेट गिरे, तो कुल मिलाकर इस समय 107 पे 5, 14.3 के बाद। सोहराब दबास, जामिन आशिक 0 पे ओवैस रज़ाक 3। फील्डर की ओर सीधे उनके हाथ में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 15वां ओवर, 107 रन अभी तक बने हैं। अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, इस बार टर्न भी था गेंद में। सोहराब ने अच्छी गेंदबाजी की है, अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। 7 रन मात्र खर्चे, विकेट भी मिला इसी ओवर में, मात्र 3 रन आए इस ओवर से। यहां कुछ रन मिलेंगे क्योंकि गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर हैं उमर लेफ्टी और बेहतरीन फील्डर हैं। सिंगल आएगा अंतिम गेंद पर, 4 आए ओवर से, 15 समाप्त। यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर 108, 5 विकेट पे, 5 ओवर का खेल शेष। Hundred and 8 for 5 after 15 overs. 5 overs are gonna come. 30 balls remaining. Zamin Ashik is on 1 of 3 and Oves Razak is on 3 of 2 balls. Oves Razak, today is an opportunity
Today is the day, and you have to be at your best. Ritik starts off with a good delivery there and keeping Zaman Ashik in a tight situation there as they are now 5 down. He's going to get one here. Keeps it away toward a sweeper cover boundary. There is Garo. Ritik is operating with the ball. He's going to be in his final over 3.2, 1 for 25. He has been up to the mark in today's spell. His first outing, his first match for Hillview Rajouri. He gets his game against the likes of United Imports, who are already through to the quarterfinals, winning 3 on the trot. And there it is, Owas Razak. Another off-color day for Owas Razak, unable to unleash yet again. It was an opportunity. It was the high time to perform and showcase. It has failed completely again. Well, that's his conventional shot. And in his own style, he's gone here. Trying to launch it, trying to slog it away. And slog sweep. Sometimes it works, but this time it just backfired him and he's on his way back to pavilion. I think it was early to bring it on. He was trying to unleash that shot, which he loves often, but this time around it didn't work. It didn't go right way. So needless from batter like Owas Razak, who was sent on a mission. There is an urgency to keep wickets intact and stitch a partnership, share a stand, or recover from that damage. As the damage is done, they're 6 down. That brings Shahrukh Dar in at number 8. Ritik is going to be difficult one for the later order batters or the down the order batters. He's known for keeping the tail under check. He can wrap it up. Fortunately for batting side, he has got 1 ball in his spell to go. 110 for 6. Zamin somehow keeps it away, so no problem there. He survives. Nelson to end the over number 16. The successful one from Ritik Singh, where he got rid of Owas Razak, the great slogger of cricket ball, is sent packing. Shahrukh and Zamin with 4 overs to go. A victory here will mean Hillview Rajouri are seriously back into this game. And this group is going to be the group of death. Look, if Rajouri prevail in today's match, Global Dudu Titans are left with no other choice. They have to win their 2 games with good margin to keep their hopes alive. And that's the beauty of league-based tournament, where you have to play 4 games or 5 games. There is a different structure. Or there, up goes the finger. He's given out. There it is, wicket number 7. He's given out by Ravi Kumar Chaurasia. Fresh show begins with celebration, with joy for Hillview. Right in front, as up goes the finger. There it is, wicket number 7. And Shahrukh is on his way back to pavilion. Misread it, unable to read it properly, unable to pick that up. That brings Faizan Roof. Well, I think he's in 100% fit. He's got stitches on his left hand. He walks in. Only the time will tell us. Is he gonna hold the bat by both hands? I don't think that he's 100% fit. He's got stitches on his left hand.
Now there is an urgency as his team is in desperate need of some 20-25 odd runs here. That's why he decided to come out tenacious and unrelenting passion, the passion for the game, and he's given out. He's stumped. Saurabh Dhaliwal has one more to his name under his belt, and Saurabh is walking away with wickets here. Oh, look at that one. It's a big out. There is a big daylight between that crease and the batter. The foot is well outside. So gonna be out. It is out. One more wicket down here. 110 for 8. Saurabh has picked up 3 of his 2.2 effective. Pick up the bowlers. He has that knack of picking wickets. Coming up with a special show here. Batting unit unable to understand. Now he's going to be on a hat-trick here. On a roll here. Saju to face the hat-trick ball. Saurabh to bowl that hat-trick delivery. Is he going to magic ball? He keeps that threat away. So he survives the hat-trick ball. So no more hat-trick there. It's 110 for 8. Oh, that one. Deep in crease is lucky. Ball eluding the target and the stumps. Now there is going to be little change in the field. Man drops down to the short third. Wraps him on pad. Short for LBW and stand down. Saurabh. Another tight over here. What an over. It's a double wicket maiden from Saurabh. Wraps him on pad and is stand down there. Hillview Rajouri in a must-win clash. Looking strong, fighting it out here. Looking stronger at the moment. On the other side, United Imports playing without Khalid Butt. Mr. 360 isn't playing for United Imports in today's match. And early this evening they lost that quarter-final at Pulwama. And that was the plus point. And Hillview cashed it on. 110 for 8 after 17 overs. The team is looking disturbed at the moment. Not finding that form. There is a kind of a lackluster as that 8 down, 110 on the board. 3 overs are going to come. 18 balls. Ramdayal has got the ball in his hand. The experience he brings in. The class he possesses. Play the domestic cricket for state, and that is a wonderful welcome. What a way to welcome the experienced lad with a lusty blow, with a terrific shot. Zamin Ashik. Lovely and pristine. Colossal and humongous. Beautiful shot again. He has got that experience with the first ball that was dispatched. It was a copybook, proper cricketing shot. Skills of a great level shown by Zamin Ashik. He obliged with that baller's back dry, lofted shot. Not keeping that down and going straight over the baller's head. 117 for 8. This is 18th over we are in. Need to bat all the 20 overs
Saju, left-hander in the middle. Zamin is going to have a word with Saju, and Zamin knows that each and every run will count and is going to be important in the context of the game. They finish on a 130-140. It's going to be interesting clash between bat and ball. A game full of competition, the excitement. 817. Good shot this time. Wide of the man. Into the wide of mid-off for 4. Into the fence. What a shot. That's gone wide of mid-off. And in no time he races away. Look that. Great shot. He's not gonna move an inch. Why he? As he's damn sure once he leapt to the bat, forward written all over it. And that is a superb boundary coming. Shram Dayal is going little fuller. And that was half tracker for Saju. Easy picking. 1-1. There is a fumble. That will bring Zamin Ashik on strike. As we're into the 18th over, this is over number 18. Oh, there was an edge to his left. Can't grab that opportunity, can't grab that catch. This over 6, 10, 11, 12 of 5 balls. Good delivery again, worked away onto the onside, deep down the crease. Bat and pad close together. Holding himself together and keeps it away. Zamin Ashik on to 11. On to 10 of 9, and he's going to carry on and continue in the remaining 2 overs. That's what they require at the moment. Management and the staff will be eyeing that Zamin will take us through the remaining 2 overs. Is he going to bat till the very last ball? Saurabh has got the ball in his hand. An evening to remember for Saurabh and Hillview. Now they feel to some extent they find the best one to fit in the lineup for the next game if they go through for the next round. And first ball of fresh over. Easy in danger. There is a man at long on and it eludes him. That's going to surprise Saurabh too. The power of Zamin Ashik. It's another towering, huge 6 of the bat of Zamin. Knelt down on one knee. Next one again. There was flight and offer. He's going with a flighted trajectory here. Trying to lure him into the big shot again and again. Is he going to oblige? That one. That is a quality. That is so nice of the bat of Zamin Ashik. Classy. Over covers and into the extra cover boundary for yet another maximum. What a shot again. Fearless, and Zamin Ashik is showing that grit. Another great shot. And this one gone over covers. Look at that. Ravi Kumar Chaurasia is looking for cover there. Unleashed that one. Gun barrel. He's firing on all cylinders here. And take a look again. That hit hard. When you hit it hard. Look at that. Straight down the ground. Little smile on his face. Ravi Kumar is fine. He's safe. That's the good part of it. 139 fade. Now he is trying to mix it up. He tried to do that. Does well on that occasion. He took all the pace off. Flighted it again, but there wasn't pace behind the ball. But he checked his shot in the end. It's on to 140 now for the loss of 8 wickets. 7 balls are going to count. This is the 19th over. And this over, Saurabh gone for 16, 17 of 5 balls. And now Saju
He's trying to launch, shaping for the big shot. Inside, it saved him. Overdone. 19 gone. 140 for 8. धन्यवाद मुनव्वर। सज्जू 5, जामिन आशिक 27, 140 पे 8, 19 की समाप्ति। और यह अवसर ज़रूर था, गेंद हाथ से टकराई ज़रूर थी, छिटकी ज़रूर और सीधे सीमा पार चलेगी। तो पिछली गेंद पर चौका आया था पिछले ओवर में। आखिरी ओवर पहली पारी का इस 14वें मुकाबले में जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 140 पे 8, 19 समाप्त। आखिरी ओवर सज्जू 5, जामिन आशिक 27, 14 गेंदों से। सौरभ ने 4 ओवर समाप्त किए हैं, 25 रन देकर के 3 विकेट। आज उनका चयन किया गया था इस टीम में। हिलव्यू राजौरी और प्रदर्शन उनका शानदार रहा, वो स्पेल उनका बहुत बढ़िया। 4 में 25 रन देकर के 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए अपनी टीम के लिए यूनाइटेड एम्पोर्ट श्रीनगर के। 140 पे 8, रामदयाल आखिरी ओवर लेकर के, उनके कोटे का आखिरी ओवर, पारी का आखिरी ओवर। 3 ओवर में 26, 1 विकेट। यह है गेंदबाजी विश्लेषण उनका। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक हवाई यात्रा पे और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर छक्का जामिन आशिक के बल्ले से, 33 पर पहुंच गए वो और कुल योग पहुंचा दिया 146। रामदयाल के विरोध यह छक्का, बहुत ही बेहतर स्ट्रोक। गेंद में उछाल जरूर थी, थोड़ी लेंथ गेंद जरूर थी, पर 6 जरूर बटोरे। 146 60 विकेट पे 19.1 ओवर की गेंदबाजी। जामिन आशिक सामने 33 पे। रामदयाल अगली गेंद लेकर के, आशिक के लिए ये गेंद एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक, गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर पर गेंद को रोक लिया गया और पलटकर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज स्टंप्स पे खेले सुरक्षित क्रीज पे। 2 रन और खाते में और 2 के साथ 148, 8 विकेट पे 19.2। रामदयाल ने 2 गेंदों से 8 रन खर्चे इस ओवर में और कुल मिलाकर 3.2 में 33 रन। सबूत एक ही रन जरूर वहां पे मिला। 33 पे 1, 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 1 शॉट का निर्णय। थैंक यू स्कोरर स्टेशन जहांगीर जॉन। सज्जू 5 पे 147 पे 8, 19.2 ओवर की गेंदबाजी। सज्जू सामने 5 पे, बड़े के लिए जरूर जाएंगे, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास होगा। और इस बार खेला जरूर है, पीछे फील्डर है और गेंद सीमा रेखा के अंदर क्या रोक लिया गया अथवा नहीं, यह देखना होगा। रन संख्या में वृद्धि होती हुए यह आखिरी ओवर पहली पारी का यूनाइटेड एम्पोर्ट श्रीनगर। 19.3 ओवर की गेंदबाजी में 149, 2 रन जरूर मिले थे इस गेंद पर। 3 गेंद उखाना बाकी। रामदयाल 9 रन खर्चे इस ओवर से। जामिन आशिक 36 पे सामने, 149 पे 8। जामिन आशिक, रामदयाल अगली गेंद लेकर के आशिक के लिए, इस बार सामने की ओर और गेंद फील्ड जरूर हुई पर कुछ रन जरूर बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और यहां 150 रन पूरे होते हुए हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब के विरुद्ध यूनाइटेड एम्पोर्ट श्रीनगर के। अंततः वो 150 का आंकड़ा जरूर छुआ। टीम यूनाइटेड एम्पोर्ट्स ने 151 पे 8, 19.4, 38 पे जामिन आशिक। बड़े स्ट्रोक की तलाश इन अंतिम 2 गेंदों में। रामदयाल जामिन आशिक के लिए ये बड़ा है, खूबसूरती के साथ सीधे पर खिलाड़ी को थमा बैठे। हालांकि एक समय में ऐसा लगा कि सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, पर सीधे उस और खिलाड़ी भी तैनात थे और उनने गेंद को कैच कर लिया। ये देख लीजिए, ऑप्शन से बाहर, उस पर बल्ला चलाया जरूर, गेंद सीधे फील्डर के पास, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास उन्होंने कैच को लपक लिया। रामदयाल को मिल गई सफलता 5वीं गेंद पर इस ओवर में। 19.5। जामिन आशिक लौटे वापस। 151 पे 9, 19.5। अंतिम गेंद का आना बाकी। 1 ball remaining. Zamin playing that cameo, invaluable 38 of 19 with strike rate of 204 sixes. 4 big shots coming into play. Now Faizan join as Saju in the middle.
The last ball of inning number 1. Faizan on strike. Ramdayal to finish his quota and inning number 1. 11 of 5 balls and a wicket coming in form of Danjiman Zaminashik. Where is this one going? 151 for 9. He swings and swings hard. Call is for 2. Look at Ritik Singh. He's so quick. Quickly onto the ball. Are they going to look for the third one? And he's going to be run out here. Faizan. They chipped in with a brace. Looking for third. That wasn't available. They finish on 153. 154 is going to be the target for Hillview Rajouri to win this one, which is a must win for Hillview. We shall be back with Chase in a while from now. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.
Assalamu alaikum. I'm Munawar and I got Sheikh Nazir in the combox. Welcome to Run Chase. We're gonna take you through the 20 overs and the chase of Hillview Rajouri. And you're watching JK Sports Time, the household channel of Jammu and Kashmir. 154 to get. To have 2 more points on the pointers table. Talking about the Hillview Rajouri. As far as Rajouri is concerned, 154 is going to be the target in today's game. Horair Sofi, I can see he's in slip cordon. He's stationed there. Zishan Ali will keep stumpers for his team in today's game. He's going to be the wicket keeper. Shahrukh Dar, no change in the bowling department. They're going to continue and carry on. They're going to go with Shahrukh in the very first over. Little attendance here. It's going to be Suryansh Raina on strike. He's got Ram Dayal. Good thing about these two teams, they're going with one experienced batter at the top of the order. It was Sahil Shafi for United Imports. It's Ram Dayal for Team Hillview Rajouri. The experience and the class will meet here at the center. It's time for action. Let's unfold the ebbs and flows here at this iconic venue. Ball number 1 of Run Chase. Nice shape there. Outward moment. Suryansh trying to apply straight away. Little shape away from Shahrukh Dar. Starts with outward. A moment there. And Suryansh was right behind it. Chasing 154. Required rate is shade below 8 and over. Shahrukh continues top rate. Trying to rise with that on the rise delivery. Trying to step up on his toes. Keeps it away to mid off. There is fielder. There is the man stationed. Not for runs. None for none. Suryansh is yet to open his account. Target is 154. Shahrukh again. Once again there is going to be the man at mid off. Could be tight. But he does well this time. And Alfan, before he could respond, the two batters scamper through. Good running. And Suryansh is off the mark with that single. Ram Dayal and Suryansh Raina. Cricket Heroes record and domestic circuit telling us the story. It just summarizes what kind of a batter, what kind of a cricketer he is. He is a wonderful cricketer Jammu has ever produced. And is serving the side of Hillview Rajouri in Red Premier League Season 2. One without loss. Up goes the finger. He's given out LBW. And Ram Dayal is going to go back to pavilion without opening his account. Look at that experience not coming into play. Unable to bring that one into play here. Only thing he can do is to walk back to pavilion. He's given out LBW. Shahrukh Dar draws the blood. Coming into the batter, that invert curve. And catches Ram Dayal in front. Caught him right in front. So the first wicket for Shahrukh Dar, the boy from Hot of Stee. He is delighted, he is pumped up. And the team is in good spirits at the moment. They lost the game in South Kashmir early this evening. But that fall of wicket straight away and those towering hits of Zamin Ashik boosted the confidence of young team, young crew. Now there is smile back on their face. And now they are looking in good colors at the moment. In good spirit.
as they got rid of one of the talented, one of the experienced and superlative from Jammu province, Ramdayal, who's gone without scoring in today's match. He was caught right in front and there was inward moment that getting better of the batter. Gaurav Chaudhary is in at number 3. Bit tricky for Gaurav. Shahrukh again. This time worked away nicely. Well, talking about that ball from Shahrukh, this surface, there is some purchase for the bowlers. If you hit the right lines and lengths, believe me, you can have something that you're going to cherish long way into the night, especially tonight and in this game. Believe me, if you hit the right line, there is the surface which is assisting you to earn that inward curve. स्वागत आप सबका, धन्यवाद मनवर। ऑप्शन से बाहर ये गेंद और खेला ज़रूर था पर सीधे फील्डर के पास। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर की समाप्ति 2 पे 1 हिलव्यू राजौरी। और वो खूबसूरत गेंद शाहरुख डार के। और अगर आप सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करेंगे, सही टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पे एक चुनौती ज़रूर होगी यहाँ हिलव्यू राजौरी के लिए, क्योंकि रामदयाल जो उनके अनुभवी खिलाड़ी वो आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। सूर्यांश रैना और गौरव चौधरी, ये नाबाद जोड़ी इस समय बीच मैदान में। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता। 154 रन बनाने हैं। मैच जीतने के लिए 153 बनाए थे यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर ने। और देखना होगा यहां से अब किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी। और दूसरी छोर से यूनाइटेड इंपोर्ट्स के पास गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे विकल्प हैं गेंदबाजी में, पर उन विकल्पों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना, ये भी एक प्रश्न जरूर रहेगा कप्तान के लिए, क्योंकि 1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी शाहरुख डार का वो बेहतर ओवर रहा। और इस समय रिक्वायर्ड रन रेट 8 प्रति ओवर के हिसाब से उतने ज़्यादा रन बनाने नहीं है, पर शुरुआत में विकेट आप गंवा रहे हैं तो वो एक समस्या रहने वाली है आने वाले समय में। शाहरुख डार के साथ अब साउदर्न पवेलियन एंड से नए गेंदबाज का चयन। पहली गेंद पर सिंगल, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 3 पे। 3 1 विकेट के नुकसान पे। गौरव चौधरी और सूर्यांश रैना। और गेंदबाजी में संभवतः फैजान का इस्तेमाल किया गया है। 3 1 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी शुरुआत चाहिए, एक बेहतर शुरुआत चाहिए। शुरुआती ओवर्स में विकेट जरूर मिला है, पर फैजान यहां से किस प्रकार से आगे प्रदर्शन कर पाएंगे। पुल किया खूबसूरती के साथ और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों का निर्णय आता हुआ अंपायर का। 6 और खाते में। सूर्यांश रैना के बल्ले से निकलने वाला छक्का, उनकी व्यक्तिगत रन संख्या पहुंच गई है 7 पे 5 गेंदों से। फैजान के विरुद्ध यह छक्का और शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी। खूबसूरती के साथ पुल किया और अपने आप को संतुलित करते हुए कंट्रोल में था ये शॉट, और 6 रन बटोर लिया अपने टीम के लिए। बल्लेबाज सूर्यांश रैना ने 7 पर पहुंचे 5 गेंदों से। 9 पे 1 दूसरा ओवर। एक तेज दरार, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता। रामदयाल का विकेट गंवाने के बाद हिलव्यू राजौरी। सूर्यांश एक बेहतरीन और अनुभवी खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाज हिलव्यू राजौरी के। ऑफ स्टंप से बाहर थी, पड़ने के बाद और बाहर की तरफ, पर गति के साथ साथ उछाल भी था गेंद में। खेला जरूर पर रन नहीं मिला सूर्यांश रैना को। विकेट सब मुश्किल परिस्थिति जरूर है, पर यहां आपको संयम और आत्मविश्वास दिखाना है। सामने सीधे बल्ले से खेलना होगा। अच्छी बल्लेबाजी गेंद की मेरिट के हिसाब से आवश्यकता भी है उस प्रकार की बल्लेबाजी की, क्योंकि यूनाइटेड इंपोर्ट के पास गेंदबाजी बहुत बढ़िया है। ये एक और खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका, दोहरे अंकों में रन संख्या में इजाफा होता हुआ, और दोहरे अंकों में रन संख्या पहुंच चुकी है 9 से बढ़कर 13। 1 विकेट पे
JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail, Athwas with confidence। और ये खूबसूरत स्ट्रोक सूर्यांश रैना के बल्ले से निकलता हुआ 4 और खाते में। पावर प्ले ऑन है, पावर प्ले का इस्तेमाल, पावर प्ले में बेहतर रन गति, ये प्रयास जरूर। सूर्यांश 11 पे 7 के दूसरे 2 गौरव चौधरी ने बनाए हैं और रामदयाल खाता नहीं खोल पाए थे उस 0 पे। यहां अब देखना होगा सूर्यांश और 14 रन संख्या। हालांकि फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं और सूर्यांश रैना और गौरव चौधरी ये नाबाद जोड़ी। ये दूसरा ओवर इस पारी का हिलव्यू राजौरी के लिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स द्वारा। 14 पे 1 दूसरा ओवर। कुछ बेहतर बल्लेबाजी, कुछ बेहतर गेंदबाजी, मिश्रण दोनों छोर से हो, दोनों तरफ से हो तो फिर मजा आएगा मुकाबले में दर्शकों को। 14 पे 1 फैजान बाएं हाथ के सूर्यांश के लिए। और इस बार देख लीजिए पड़ने के बाद नीचे रही गेंद, बिल्कुल भी उछाल नहीं था गेंद में। विकेट कीपर से चूक जरूर हुई और रन भी यहां पर जरूर मिलते हुए टीम को। एक और खाते में 2 के 2 का अभी भी आना बाकी इस ओवर में। ये 15वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का। कल मात्र एक मुकाबला शाम के समय आपके साथ जुड़ेंगे ठीक 6 बजे। 16वां मुकाबला होगा JK सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। ये बेहतर है पर पीछे फील्डर जा रहे हैं 2 खिलाड़ी। जब तक साहिल गेंद को फील्ड करके थ्रो करते कुछ रन जरूर बटोरे। पुनीत, उमर लेफ्टी, उसके अलावा अन्य दीगर बल्लेबाज। तो बल्लेबाजी में डेप्थ जरूर है हिलव्यू राजौरी के पास। 17 पे 1 JK सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। नए ख्वाब, नए इरादे और एक नई सोच JK सुपर सीमेंट के साथ बना एक मजबूत कश्मीर। ये गैप में पर पीछे फील्डर तैनात। एक और सिंगल मिलता हुआ यहां पर, रन संख्या में वृद्धि। आखिरी गेंद पर सिंगल, ओवर की समाप्ति, 2 समाप्त। हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब 18 पे 1। शाहरुख डार के पहले ओवर से 2 रन आए। इस ओवर में अच्छे खासे रन सूर्यांश रैना और गौरव चौधरी ने बटोरे। गौरव 5 पे, सूर्यांश 11 पे। और 2 ओवर में हिलव्यू राजौरी 18, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से जो करंट रन रेट है। और रिक्वायर्ड रन रेट 7.56। 1 विकेट की तलाश। अच्छी गेंदबाजी शाहरुख डार ने पिछले ओवर में की थी, वो सही दिशा और लंबाई पे सटीक लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने गेंदबाजी की थी। सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब 18। 1 विकेट के नुकसान पे गौरव। अच्छी गेंद एक बार फिर नीचे रहती है। और इस विकेट का अलग प्रकार का व्यवहार, क्योंकि कुछ गेंदें अच्छी खासी उछाल ले रही हैं और कुछ गेंदें पड़ने के बाद नीचे रह रही हैं, तो थोड़ा सा दुविधा की स्थिति जरूर बल्लेबाजों के लिए इस विकेट को पड़ना। 18 पे 1, 2.1 के बाद तीसरा ओवर। गौरव चौधरी 5 पे। लगातार हिलव्यू राजौरी के लिए उन्हें अवसर मिले हैं, यहां उन्हें उस क्षमता का प्रयोग करना होगा। खूबसूरती के साथ थोड़ा फाइन खेले जरूर है। पीछे तैनात हैं खिलाड़ी। 1 रन जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। एक और खाते में 18 से बढ़कर 19 पे 1 तीसरे ओवर में। गौरव और सूर्यांश रैना 8.14 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम।
हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब या उनका अपने पूल में आखिरी लीग मुकाबला है, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने 3 मुकाबले खेल करके 2 में हारे हैं, 1 में जीत अर्जित की है, और ये उनका आखिरी लीग मुकाबला अपने पूल में। और वहीं पे यूनाइटेड इंपोर्ट का भी आखिरी पूल मुकाबला, आखिरी लीग मुकाबला अपने पूल में, और उन्होंने तीनों मुकाबले जीते हैं। फिर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, उतना उछाल था नहीं जितनी उपेक्षा कर रहे थे, पर भाई के रूप में ये 4 और खाते में जुड़ेंगे, 4 बाइज और उपहार के रूप में, और रनों की आवश्यकता भी है। और विकेट कीपर से चूक हुई और 4 रन और खाते में, रनों की आवश्यकता भी है। हिलव्यू राजौरी को वो उपहार के रूप में मिलते हुए 23 पे 1, 2.3 के बाद शाहरुख डार 1.3 ओवर 3 रन 1 विकेट। सूर्यांश रैना 11, गौरव चौधरी 6। अरे एक अच्छी पार्टनरशिप ये दोनों बल्लेबाज, क्योंकि शुरुआत में वो पहला विकेट 0 पे, ऐसे में अगली गेंद लेकर के अच्छी गेंद थी स्टंप्स पे, पर खूबसूरती के साथ उसको खेला और बिना किसी रुकावट के गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका, 23 से बढ़कर 27। अच्छी बल्लेबाजी, गैप में खेला था गेंद को, गेंद की गति कई तेज थी फील्डर से। 4 रन और खाते में आए। शाहरुख डार के इस ओवर की अगर हम बात करें तो एक सिंगल, 4 बाइज, फिर चौका, 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में। 27 पे 1, एक और सिंगल के लिए, ये अच्छी मानसिकता है। वही पास पे खेल करके दौड़ पड़े, सिंगल डबल से दबाव भी बनेगा विपक्ष पे, फील्डर्स पे यूनाइटेड इंपोर्ट्स के। 1 रन और 28 पे 1। अभी भी एक गेंद का आना बाकी इस ओवर में, ये तीसरा ओवर है, 28 तक पहुंच चुकी है। 154 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए हिलव्यू राजौरी को, और अवश्य उस जीत की तलाश यूनाइटेड इंपोर्ट्स के विरुद्ध हिलव्यू राजौरी को। आखिरी गेंद, गौरव चौधरी सामने 6 पे, शाहरुख डार का सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर हल्का सा उछाल था मिडिल स्टंप पे ये गेंद, और 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। एक और सिंगल मिलता हुआ, अंतिम गेंद पर सिंगल। ओवर की समाप्ति 3 समाप्त, 29 पे 1, हिलव्यू राजौरी। Shahrukh Dar bowling from Southern Pavilion and bowled 2 overs, 2 tight overs. Bit unlucky as wicketkeeper lost control on that 4th ball of an over where he conceded needless runs. But that was gifted to Hillview. And Hillview Rajouri needed that boundary, and out of nowhere, they got that boundary and getting those 4 runs. 29 for 1 after 3 overs. Suryansh Raina playing couple of shots on either side of the ground. He's going to be key factor in today's game. He's holding key at the moment. Afan is into the attack, unable to stop the ball, and ball trickles into the boundary. It tees at the fielder on its way to the fence. He's bowling with that kind of a side arm action. Would have been a great stop by Sahil Shafi. Ball beneath the hand goes down towards the wide of extra cover boundary. Gaurav will feel little pride there. He's on to 33 of 1. That one is in the gap again. Oh, there is a fielder. Zamin is there to take care. And he's the Sam lad, Sam boy, who played that wonderful knock and those cracking shots.
at the fag end when they needed to finish around 153. It was Zamin who stepped up 4 6s and couple of 4s to help his side, scoring those invaluable 38. Now, Suryansh and Gaurav Chaudhary need to take that responsibility. There is a huge responsibility and a burden on their shoulders as of now. As Ramdayal gone cheaply, he was undone with a beauty by Shahrukh Dar. 34 for 1. Oh, nicely done. Worked away. Suryansh is finding runs. That's the good part of left-hander. He's not letting bowlers settle down a bit. Rotation is going on. After each and every ball, they're going from one end to the other end because of that rotation. Singles keep coming. Singles are coming. Afan, what he has in store. Gaurav trying to smoke it away. There is a fumble. 2 men on that portion. The first one inside the circle, there was Horar. Then it beats the man around that boundary cushion. That's 4. The awkward bounce in the outfield. And Gaurav swapped it. Swapped hard. He found his boundary. Invaluable 4 to his credit. And that 4 is going to help his side. Oh, nearly played on. That one. Will it roll past? The Fazul gets there, but not before Gaurav is back for the second. And that's the good thing for Hillview Rajouri, that runs are coming. We saw a boundary coming. A couple here. That will really relieve that pressure. It stays low again. Gaurav unable to pick it properly. Unable to keep that one away. It's 4 gone, 41 for 1. We're done with the 4th one here. And look, Gaurav is telling about the bounce of the track. What can I do? He's telling Suryansh what you're expecting from my side when there isn't a bounce on offer. It's keeping low and low. It's dropping and dropping. It continues to drop. What can I do? It stays touch low. It stays low. It capped low. 41 for 1. Current rate, they're going 10.25 and over. Required rate is 7.06 and over. Current rate is good. And the required rate isn't a big concern. That's only going to be concern if you get overcautious and lose wickets in quick succession. Yeah, this is a bit tricky at times. It looks that there isn't enough bounce under lights, but you have to bat properly. That one, it's a good shot on drive and through the mid-on area down to the long on fence for 4. In no time, no problem this time with the outfield as it runs away. Suryansh, he hits it through the line. No problem at all, and ball roll past quickly. 45 for 1. The aggression continues. Intent is there. Energy is also there. There is going to be the shot for LBW and is turned down. Whenever batter tries to go cross the line a little bit, whenever they're trying to work it away, we have seen from day one that slowness of the deck, that little bounce is troubling batters. That's Apish, and he's taken. It's wicket number 2 down. He cuts hard, and it carries. It goes straight into the hands of Faizan there, and he makes no mistake. So Suryansh Shurana is gone here. Can't keep it down. Good catch. Both hands aloft.
Little celebration from Sahil Shafi there as he gets his man Suryansh. The other day he provided that quick start, and yet again here scoring those runs at brisk pace. Then a 2 down. Number 4 walks out. The score ticker is going okay, but the bowler snap, it is static there. There is no change in it. It's a kind of a technical snag and glitch we are going through, we are facing at the moment. Hope scorer will understand and look into it. He will try to fix it, as it is keeping us in a kind of a dark there. We don't know what's going on. Yeah, it is visible on a screen right now, but we also need that portion to be okay and at its best. Up to the mark. Ankit Das is in. Now it's up to Ankit and Garo to take that. Rasma Garo is doing his part. He has batted for 12 balls, battling here, and is on to 18. Ankit is the new one to join him in the middle. Sahil Shafi, the top run getter of the tournament. Now he's helping his team with the ball too, in absence of Khalid Butt. He's the senior person in the lineup. Oh, good stop again by Shahrukh Dar this time. Save at 4 runs, 4 important runs for his team there. The outfield is once again lightning quick. It's a Silpri again. Oh, that one. The bowler can't believe. Even batter is surprised at Ankit Das as he gets away with that one, and Garo telling him that what can you do? Even I misread it earlier on. Now this is the thing that is going to trouble the batter till the very last ball. As a proper bowler, you have to mix it up. Looking at the surface, there is something. You are getting certain amount of drift, turn, and ball is keeping low. Let that slow bounce and slowness of the deck come into play. It's up to you how you adjust. And if you take pace off, let the ball turn a bit, and those cracks will surely come into play. There is a kind of a rough which is developing, and there is going to be that rough in its adequate amount at the moment. I have seen on both ends before the toss there was a rough developing little bit gradually. Now it's going to be enough, and there is an indication of that, because ball, whenever he hits that rough patch, it's making the life of batter tough, at times hell. Straight to 1 from Saju. This is over number 6, the last of mandatory power play. Ankit has got Garo Chaudhary in the middle. Saju can be handful at times. He has proven his mettle plenty of times. One more time, United require that effort and that spell of high quality against a quality side of Hillview. The experience is there. Highest number of matches in their lineup. Most of them are played domestic level cricket. They brought in huge experience, variation and variety to this playing 11. 2 for 47, 6th over underway. Just well. With that angle blade, eyeing a single, won't get that. I request once again our scorer to rectify it, because there is Shahrukh Dar being displayed on the screen. It's Saju, the left arm spinner, who's bowling. And there is a kind of a celebration from wicketkeeper, as it was just like that round of action going on.
जम के जकड़, कस के पकड़. Just like that, rotation on its axis, a round arm celebration. Look once again, look. Take a look again. But umpire looks unmoved, so no problem at all. He survives, gets away with that transitionally. For a while he thought that there was an edge, there was a nick. 6 done, 2 for 47. 6 ओवर के बाद 47, 2 विकेट खोए हैं रामदयाल और सूर्यांश रैना. अंकित और गौरव ये नाबाद जोड़ी 7.64 रिकॉर्ड रन रेट, 7.83 करंट रन रेट. और पिछला ओवर बेहतर घटा क्योंकि उसमें ज़्यादा रन आए नहीं. साहिल एक ओवर लेकर के नीचे रही गेंद, ऑन साइड में उसको ड्राइव किया एक सिंगल के लिए. और मिड ऑन के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते, सिंगल मिलता हुआ. 7वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं साहिल अपनी टीम यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के लिए. एक और अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी. और एक बार फिर पड़ने के बाद नीचे रहती हुई मिडिल स्टंप की ओर. स्टंप्स पे गेंदबाजी साहिल शफी द्वारा. अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में साहिल द्वारा. गौरव चौधरी, अंकित नाबाद बीच मैदान में यहां लॉफ्ट किया है सीधे स्टैंड्स में. एक और बड़ा स्ट्रोक, 6 मिल जाएंगे यहां पर इस छक्के के साथ. 50 भी पूरे होते हुए हिलव्यू राजौरी के. और स्पॉट से गेंद को पिक किया, एक कदम आगे निकाला, गेंद के पिच तक पहुंचते हुए खूबसूरती के साथ 6 रन अर्जित किए. और 6 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि. हिलव्यू राजौरी 50 को पार करती हुई रन संख्या में 54 पे 2. 6.3 के बाद चौधरी पहुंच गए 24 पे. 17 गेंदों से गौरव 24 एक अच्छी पारी खेल रहे, एक तेज तरार पारी खेल रहे हैं एक छोर से. और दूसरे छोर से अंकित ने 7 गेंदों से 2 रन. अंकित का आज चयन किया गया है टीम में. सौरभ भी टीम का हिस्सा है. इस बार अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग. और गेंद यहां से छिटकती तो चौका मिल सकता था. और फैजान बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग. 55 पे 2 7वें ओवर में. कुछ दर्शक जरूर यहां उपलब्ध हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को. वापस साहिल शफी की ओर, बैक थ्रू द बॉलर बगैर किसी रन के. आखिरी गेंद 7वें ओवर की 55 पे 2. अंकित सामने और पैड पे, और जी हां स्वीकारा. साहिल को मिलने वाली एक और सफलता, ये दूसरी सफलता साहिल को, ये तीसरी सफलता यूनाइटेड इंपोर्ट्स को. अंकित को वापस लौटना पड़ेगा. 9 से बनाए 2 और 55 पे 3 7 के बाद. एक बार फिर यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम वापसी कर दे. एक और विकेट साहिल को मिलता हुआ. बल्लेबाजी से कमाल, गेंदबाजी से कमाल, फील्डिंग में कमाल. ये इस खिलाड़ी का हुस्न जमाल. और कहीं पर भी रखा नहीं अपनी टीम के लिए मलाल. संभवतः पुलवामा और अल समद क्रिकेट क्लब ने वहां मैच हारा और वैली वॉरियर्स सीधे सेमीफाइनल में. तो दूसरी टीम बनी है सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली, क्योंकि यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने वहां हारा और मुराद सैम स्ट्रीट ने क्वालिफाई किया है. तो 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं. और अगली कौन सी 2 टीमें होंगी ये आप तक ज़रूर पहुंचेगा वहां से अपडेट. फिलहाल 55 JK सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल. अथवास विद कॉन्फिडेंस, नए ख्वाब, नए इरादे. JK सुपर सीमेंट और एक नई सोच. JK सुपर सीमेंट के साथ बनाएं एक मजबूत कश्मीर. 55 पे 3 7 के बाद अनुज कुमार और गौरव चौधरी ये नाबाद जोड़ी 25-18 गेंदों से. और अनुज 0 पे. यहां से हिलव्यू राजौरी की अगर हम बात करें, उन्हें 1 जीत मिल चुकी है और कोशिश जरूर होगी क्या दूसरी जीत अर्जित कर पाएंगे. पर यूनाइटेड इंपोर्ट्स वो जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए उतरी है. और यहां केवल 1 रन मिलेगा.
1 रन और खाते में 56। 8वें की शुरुआत। जो गेंदबाजी की अगर हम बात करें, शाहरुख डार अभी भी अटका हुआ है और पिछले कुछ समय से अनुज कुमार और गौरव चौधरी 26 पे गौरव हैं, अनुज कुमार 0 पे, खाता खोलना बाकी है, अभी अभी आए हैं। और अफान वानी की गेंदबाजी कमाल की और सीधे फर्स्ट स्टंप्स पे जा टकरा। एक और विकेट का पता, नीचे रहती हुई गेंद, बिल्कुल इस विकेट पे उछाल उतना है नहीं। निश्चित तौर पे देखा जाए तो जैसे यातायात चल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग पे, और बिल्कुल वैसे ही यातायात की याद दिला दी और सीधे स्टंप्स पे जा टकराई। अफान वानी को मिल गई सफलता और उनका सेलिब्रेशन भी देखने लायक क्यों ना हो। कमाल की सात 7.56 पे 4, 154 बनाने हैं। 98 की आवश्यकता यहां से। यह 8वां ओवर, 4 गेंदे इस ओवर में और उसके बाद 12 ओवर, यानी कि कुल मिलाकर 76 गेंदों से 98 रन बनाने मैच जीतने के लिए। पर यहां चौथा विकेट गंवाया है 56 पे। Bad bounce, low bounce on offer, and that ball almost rolled beneath the bat. And Anuj Kumar, he was clueless what to do and how to keep that run away and out. And it was hard to keep that away and out. Sometimes you succeed, but most of the times, plenty of times, bowler gets the last love because of that low bounce. Now he's trying to press those portions where it's breaking up a bit. Little rough is there. Some of the areas of concern, the patches are developing there. Whenever there is little bounce, Rohan and Gaurav will feel at ease. And sometimes all of a sudden, so that's why you can't trust it. It drops. When it drops, that remains to be seen how Rohan and Gaurav will operate and how they will keep that threat away that is being posed by the bowlers. Now another thing is about Sahil Shafi, how he will operate with the bowlers today. How he will use his spinners cautiously. He has to be cautious while using his spinners here, and the spinners also need to use those special skills on a slower surface where there is low bounce and offer. That is totally bad, the one we saw against the likes of Anuj Kumar. Talking about this event, it is a massive JK Super Cement Red Premier League Season 2 and presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Good shot through the line down towards long on. It's day number 8, match number 14 of Red Premier League, second season. One more over done, 60 for 4 after 8 overs. They're looking good at the moment, but the wickets column, the number of wickets they lost in making those 60 runs, while putting those 60 on the board, they lost 4 of the batters, and all were quality. All were experienced batters who were having loads of experience. Garo and Rohan need to take that responsibility. Partnership is going to be important. Not just partnership, also need to rotate here. Rotation is important. Avoid playing dot balls. Don't chip in with too many dots. That will make it difficult chase this evening, and that's 4. That's a quality hit. Anything bounce, anything in his zone, shot, and he's gonna punish it. He punished that one. Quality of a shot from the bat of
Garo there. Look at that. In control. Literally, his eyes lit up when he saw that a kind of a hop tracker at a good bounce. And that was a quality shot. 4 for 64. The next one, it stays touch low. Dig out nicely. You need patience of next level. You got to be patient there. Hold on to your nerves and bring the bat down in time. Could be tight. Got to be hurry, and he's okay. He's safe there. Faizan bit late to respond, and that allowed the single. Garo and Rohan Cole. United set 154 for chase. It's a must-win game for Hillview. That's good cricket. Smart from Rohan. With that long stride. This is the other way to keep that low bounce and the turn or the drift of the surface away. We're into the 9th over. Saju in search of one more here. And United's, they are really searching one more here. They're going to kill here. They want one more badly at this very crucial juncture. One last time in 9th over. And it's worked away nicely. They're not going to look for the second. They're going to contend with one. 9 done. 867 for the loss of 4. Garo and Rohan Cole need that application. How to bat on a silver surface where there is low bounce on offer, where there isn't too much bounce. Ball is keeping low, ball is turning, there is a drift. Some of the areas where it looks sluggish when it comes to the outfield. Those who take pace off the ball, they pose a kind of a threat that looks tough to face, and to rise against that will take character of next level. 67 for 4. Afan has got the ball again. And Garo is middling it right now. He's got his eyes in. He knows the surface very well. And it's up to Garo now. He has to make others bat around. Let them break free and remove that pressure which is on their nerves at the moment. Are they going to bat free with freedom? 4 for 68. Bending your knees, keeping head and eyes on the ball is important here. You can't take it for granted when it comes to the trusting the surface and the bounce. You have to be on your toes, careful and cautious, watchful. Improvise, cleverly done. There is going to be man, but can't prevent that brace. Smart cricket. And is getting better with the passage of time. Gaurav Chaudhary. It's 37 up 28. Gaurav. Look how deep he's going in crease. The best thing about Gaurav is he's middling it, he's reading it out of the hand and he's judging it up the surface. Others failed to do so. They were unable to understand the surface. They misread. There was a kind of miscalculation going on, and that kept them on their toes, and they were unable to settle down a bit. And 4 of them perished. Last ball of 10th over. Rohan goes aerial in the gap. Will it go past? No, there is Faizan. He cuts it up, but none before the 2 batters. Settle for a brace with that. It's 74 for 4 after 10 overs. And the remaining 10 overs, they need 80 runs.
at the rate of 8 and over with 6 wickets in kitty. 1 or 2 wickets here at this very crucial juncture. Soon after the drinks break will turn the tide. It is going to be an uphill task. This is JK Super Cement. नए ख्वाब नए इरादे. JK Super Cement. नए ख्वाब नए इरादे. Red Premier League Season 2 presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. साठ गेंदों से 80 रनों की आवश्यकता. 74 पे 4 10 समाप्त. रोहन कोल 6 पे 5 गेंदों से. गौरव चौधरी 38 बनाए 30 गेंदे के लिए. रिक्वायर्ड रन रेट 8. करंट रन रेट 7.40. अब देखना होगा 60 गेंदों से 80 रन. हालांकि 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको रन बनाने हैं. 6 विकेट सुरक्षित है और यह विकेट अगर आपको मिल जाता है जल्दी जल्दी तो फिर यूनाइटेड इंपोर्ट्स एक और दबाव में खड़ा कर सकती है टीम को. हिलव्यू राजौरी की यदि बात करें वहीं पे हिलव्यू राजौरी को अगले 4-5 ओवर काफी महत्वपूर्ण है. वहां एक साझेदारी को जो इस समय रोहन कौल और गौरव चौधरी निभा रहे हैं, इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा. इस साझेदारी को और डीप ले जाना होगा तो फिर अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं. 10 के बाद 74 पे 4. यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर के विरुद्ध हिलव्यू राजौरी. ये पूल बी का मुकाबला और पूल बी का ये दोनों टीमों के लिए आखिरी लीग मुकाबला, क्योंकि चौथा मुकाबला हिलव्यू राजौरी का, चौथा मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स का. दोनों टीमें अपना आखिरी लीग मुकाबला खेल रही हैं इस पूल से. और पिछले 3 मुकाबलों में यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने तीनों में जीत अर्जित की है. अंक तालिका में पूल बी से वो सर्वश्रेष्ठ हैं. अंक तालिका में 6 अंक उनके और हिलव्यू राजौरी के 2 अंक हैं 3 मैच में, क्योंकि 2 हारे हैं 1 जीता है और ये उनका चौथा है. यहां से जीत तो 4 अंक, यहां से हार तो फिर वही 2 अंक रहेंगे अपने 4 मुकाबलों से. हिलव्यू राजौरी के 74 पे 4. 11वें की शुरुआत. ड्राइव किया और सीधे वहां पर शॉर्ट मिड ऑफ पे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया. रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. एक बार फिर सम्मान दिया. ये नीचे रही थी गेंद जरूर, कोई भी उछाल नहीं था गेंद में. और इस विकेट की ये परंपरा जरूर रही है. कुछ गेंदें अतिरिक्त उछाल लेती हैं, कुछ गेंदें बिल्कुल पर्दे के बाद नीचे रह रही हैं. तो आसान है नहीं इस विकेट पे बल्लेबाजी करना. गौरव चौधरी 38 पे, रोहन कौल 6 पे. 74 पे 4. एक बार फिर दिशा दे दी. इस बार कवर के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड किए. साहिल शफी पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. 56 गेंदों से 80. 74 पे 4. 4 गेंदों से अभी तक रन नहीं आया है. इस बार ऑन साइड में खेले और मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात. सिंगल मिल जाएगा. 1 रन और खाते में. 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 74 से बढ़कर 75. 4 विकेट पे आखिरी गेंद. 55 गेंदों से 79 की आवश्यकता. कोल सामने. खूबसूरत कलाइयों के सारे ड्राइव. एक बार फिर साहिल के पास. ओवर से मात्र 1 रन. अच्छा ओवर गया. 11 समा 75 पे 4. 10 में 74, 11 में 75. 1 रन आया ओवर से. 54 गेंदों से 79 रनों की आवश्यकता. ये 8.78 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका. 6.82 करंट रन रेट. रोहन कौल 6 गेंदों से 6. गौरव चौधरी 35 से 39. मैच नंबर 14 JK Super Cement Red Premier League second edition 2025 presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. 54 गेंदें
79 की आवश्यकता। रोहन कोल और गौरव चौधरी। गौरव ने 39 की एक बेहतरीन पारी के लिए, पर इस पारी को और बेहतर करना होगा, बड़ा करना होगा, अंत तक खेलना होगा। यहां लॉफ्टेड स्ट्रोक और गेंद जाएगी सीधे स्टैंड्स में। बड़ा स्ट्रोक गौरव के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। और पिछले ओवर में मात्र 1 रन आया था, इस ओवर में अफान के विरुद्ध चांस लिया, गेंद के पिच तक पहुंचे, लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, छेलते हुए यहां और छक्के के साथ। और सामने जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी 81 पे 4, 11.1 के बाद 73 चाहिए 53 गेंदों से। एक और सिंगल मिल जाएगा, ऑन साइड में खेले जरूर, पीछे फील्डर पलटकर दूसरे रन के लिए तेजी के साथ। और 2 और खाते में, 81 से बढ़कर 83, 4 विकेट पे 11.2, 52 गेंदें, 71 की आवश्यकता। दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ खूबसूरत मैदान। और इस मुकाबले में जीवित रहना है, फिर इन 2 बल्लेबाजों को पार्टनरशिप निभानी है। नीचे रही थी गेंद, पर भाग्य ने साथ दिया यहां पर बल्लेबाज का। अन्यथा 51 से 71, 47 चाहिए। और लीजिए, यहां सुरक्षित हैं, वो कुछ रन बटोर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। भैया आप अपील में रहे और बल्लेबाज 2 की दलील में। 2 रन और खाते में, रन संख्या पहुंच गई है 85 पे, 4 विकेट पे 11.4, 50 के 269 की आवश्यकता। हिलव्यू राजौरी वर्सेस यूनाइटेड इंपोर्ट्स, मैच नंबर 14, जेके सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। लेग स्टंप की शेप में एक सिंगल मिल जाएगा। आज फील्डिंग कमाल की रही है यूनाइटेड इंपोर्ट्स की, पर यहां विकेट अवश्य चाहिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स को। 86, 4 विकेट पे, एक रन की महत्वता इस मुकाबले में यूनाइटेड इंपोर्ट्स के विरुद्ध हिलव्यू राजौरी को। 49 से 68, रोहन 6 पे 48, गौरव ने। और लीजिए, गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। रोहन कोल पहुंच गए 10 पे, ये चौका मिलता हुआ आवश्यकता थी। और इस ओवर में अच्छे खासे रन बटोरे हैं अफान वानी के विरुद्ध। 4 खाते में जुड़े, 1 बाउंस इनटू द फेंस। 4 और 4 रनों के साथ 90 पे 4, 8 ओवर में 64, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से 48 गेंदें, 64 की आवश्यकता। कोल 10, चौधरी 48। $64 away. Got a bit lucky on that occasion against that ball of Afan Vani. But that was a good call from umpire. Spot on from Ravi Kumar. 64 needed from 47 balls. Just well again. This could be tight. Direct hit needed. These singles are going to be crucial, and they're unable to dry up these singles. And they will help the 2 batters to keep themselves on the track. On to 49 now, 42 balls. Rohan on strike. Good looking shot again. Call is going to be for 2. But he decided against it as Tafazul is quickly onto the ball. Tafazul Rashid. So quick there and denied the possibility of second. Is he going to bring up his 50 here? On to 49 now. That's a good looking shot. Scared driven. Gonna be runs. 4 of them, and that's 50. He's fought hard. What an innings. A remarkable turnaround, and Gaurav Chaudhary, that resilience, standing tall, strike rate of 123, 4 fours and 2 sixes, on to 53 of 43 balls.
the man who has played that anchoring role, and they're still in with a chance. It's because of Garo, who's not holding back. He has a vision in his eyes. He's going to look forward. 57 behind from 43 balls. Last ball of 13th over. And Rohan goes aerial. And that's away from the Sante. It's out of here for 6. 41 to get from 42 balls. And that 6. A crucial hit up the bat of Rohan Cole. Watch that. Incredible hit. The power behind the shot. Use of power. Extension of arms again. It's gone some 7 or 8 yards beyond the boundary line for a colossal 6. Captain Sahil is looking concerned at the moment. You can see that on his face. A little grim at the moment. Little sadness is there. Looking a bit sad in absence of Khalid. Now he has to balance. He has a role to play. All eyes on Sahil. How he will keep the pack together. The rotation of bowlers is another aspect. People will be eyeing on this lad, how he will mix it up. The marshalling. And interesting figures. The current is 7.92 and the record is 7.29. He's marshalling his troops at the moment. But a lot of things will be discussed after the completion of the game. Once it will culminate, everyone will talk about it. This should have been there. This should have been done, and there was the requirement, and that situation was demanding this and that. These things will come into play later on. There are going to be comments coming in, flowing in at a good pace. 51 from 41. First ball, he was trying to dab it away. Now there is going to be a man to protect that dab, as he was trying to run it down to the third man with that glide. 100 comes up, 103. Pulled nicely. And that's in the gap. That's 4. Quality shot again. And Garo, whatever he touches this evening, he's turning it into gold. The only difference between two teams, he's standing there. He's standing tall. And this lad is going to bat tonight with authority, as he's batting in that style. 58 of 46. That was wide of the off. Faizan Roof has that ability to mix it up with slower ones. The knuckleball and the slower bouncer is the strength of Faizan Roof, the highest wicket taker in that university tournament. 107 for 4 off after 13.2. Garo, the lone man, he's keeping their boat afloat in shallow waters. The man walked in when they were in tatters. He decided that I'm going to recover. I'm going to work as a captain here. Will find my boat somewhere around that shore or the bank. 107 for 4. Good shot again. Rohan Cole. Unstoppable again. This time over covers. And that's gone in no time into the cover boundary fence for 4. Lifted up. Kills the man on edge of the circle. Watch that. Wonderful timing. Great connection. Solid one. One bounce into the fence. Faizan unable to put brakes on. Down the leg side. Gonna be wide. It is wide. 41 needed from 38 balls. Pressure back onto the bowling unit. And Hillview are seriously back into this one. They have 6 of the batters in the kitty. And Rohan, he batted for 21 of 10. Another cameo. Another handy and helpful cameo.
Garo batting in different style, and that was the need of an hour. When he walked in, it was a tricky situation. But the only batter who shown that grit, those guts, didn't come to that lower bounce or the bad bounce here. 40 needed from 37 balls. He's on 59 now. Oh, look at that one. Once again he's lucky, but he's applying himself. He has adjusted to the conditions here. 39 from 36. Shade over on a ball. It's their game to lose. Let's see how things will pan out, how it will unfold. Find it out only on JK Sports Time Facebook, JK Sports Time YouTube, moreover Red FM JK YouTube. And this is Red Premier League Season 2, Day number 8, Match number 14. The title partners JK Super Cement, नए ख्वाब नए इरादे और एक नई सोच JK सुपर सीमेंट के साथ बना एक मजबूत कश्मीर. यह है कश्मीर का वक्त, गेम बदलने का. JK सुपर सीमेंट, बिल्डिंग स्ट्रांग, presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. In addition to this, we have Dubai Grand International, powered by MA Rajouri and Sons, co-powered Paristan the Bridal Lounge. Then we have exclusive J&K Bank in association with Jammu Mustard Oil. That's it. Thanks to the sponsor of JK Sports Time. It's because of our sponsors we're here. Thanks to the Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pump or MHM, by Rafiwani, Hamdan Irkins, the importers and the exporters, H&D Complete Kidswear, Just Bukhara, one of the best and the special one. 115 for 4. Good shot. Good looking one. But there is Zamin Ashik. He helped his team to finish around 153. He pushed it to 153. The man pillar, hitting it hard, timing it nicely. At the fag end now the two batters, Rohan Cole and Garo Chaudhary, they cemented their place in today's match. They're looking so solid at the moment, so strong. Against the likes of Rohan and Garo Chaudhary, it looks a good track to bat on. It's because of that adjustment and showing those applications which are applicable on a surface like this. Oh, this time it's played on. I think it's played on. And we will surely go through that replays again and look at the Sahil Shafi. He pumps. He's pumped. And he pumped on that occasion. Take a look again. Oh, he's played on. He's dragged on. Chopped on. Cleaned him up. But it took lots of time to remove Garo Chaudhary, the one who brought them back into the chase, back into the game. Rohan Cole, who's going to join him, 37 behind now from 31 balls. We're just talking about that. It's again a commentator's curse against the run of play. Wicket coming. I was talking about that Garo Chaudhary, the way he batted today. It was a comeback innings, a knock that kept his side tied to the chase. And not just in with a chance. And if they lose this one, they must be kicking themselves late into the night. And they have to blame themselves. Yeah, it's a tricky surface, no doubt about that. It's a tough one, but not unplayable one. Still playable. Look, if Garo can score 60, why can't others? They too have an opportunity, but need to bat circumspect here. That brings Saurabh in at number 7. Straight away, Saurabh keeps it away. Successful over comes to an end. 15 gone. 37 from 30 balls. One or two tight overs here will make it once again that interesting and intriguing
like that of Detective Now, Masala film? And can they edit that Kashmiri spice and flavor? That remains to be seen. Are they gonna make it full of twist and twirl, entwined? Are they gonna do that? Let's see. With Sheikh Nazir. थैंक यू, धन्यवाद। 30 से 37, 15 समाप्त, 117 पे 5। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। सोहराब धालीवाल नए बल्लेबाज, रोहन कोल 23 पे 13 गेंदों से। और सोहराब का आज चयन किया गया है टीम में। 117 पे 5, 15 समाप्त, 5 ओवर का खेल, 7.40 रिक्वायर्ड रन रेट पर। रोहन कोल एक सेट बैटर हैं, दूसरे छोर से सोहराब आए हैं और सोहराब को सहयोग करना होगा, समर्थन देना होगा। दूसरे छोर से एक एंकरिंग रोल प्ले करना होगा। 37 चाहिए 30 गेंदों से। साहिल 3 ओवर 14 रन 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। शाहरुख दूसरे स्पेल में करेंगे गेंदबाजी। सामने रोहन कोल 23 पे 13 मात्र गेंदों से, करीब 200 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट इस इनिंग में, इस पारी में। शाहरुख डार नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। 16वां ओवर 30 से 37 और पहली गेंद पर यह चौका मिलता हुआ शाहरुख डार के विरुद्ध। रोहन कोल के बल्ले से निकलने वाला चौका, 27 पर पहुंच के 14 गेंदों से। शुरुआत शाहरुख डार के ओवर की, और उछाल था, पुल किया खूबसूरती के साथ और 4 रन बटोर लिए रोहन कोल ने। 4 और खाते में हिलव्यू राजौरी अब इस चौके की सहायता के साथ 121 पे 5, 33 चाहिए 29 गेंदों से। नजदीकी मामला, लक्ष्य के नजदीक, सफलतापूर्वक प्रयास। हिलव्यू राजौरी का दूसरी जीत होगी अपने चौथे मुकाबले में। अगर यहां से ये जीत अर्जित कर लेती है हिलव्यू राजौरी की टीम, वहीं पे विकेट प्राप्त करने होंगे। एक बार फिर घूम करके खूबसूरती के साथ निकाल दिया, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए 2 गेंदों से 2 चौके लगातार और 4 और खाते में शाहरुख डार के विरुद्ध। अतिरिक्त तो चलता और खूबसूरत शानदार स्ट्रोक, पुल किया एक बार फिर, 4 रन और बटोर लिए। 2 गेंदों से 2 चौके, 29 चाहिए 28 गेंदों से। अब रन है बॉल, क्योंकि मात्र अंतर जो है 1 का है। 28 गेंदें हैं, 29 रन है, मात्र 1 रन ज़्यादा जो बची हुई गेंदें हैं। रोहन कोल 31 पे 15 गेंदों से। सोहराब को खाता खोलना है, मात्र 1 गेंद का सामना किया है। 6.21 रिक्वायर्ड रन रेट, 125 पे 5, 154 बनाने, 125 तक पहुंच चुकी है हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब की टीम। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन, presented by Athwas Retail, Athwas with confidence। रन संख्या इस समय 125 पे 5, 15.3 ओवर की गेंदबाजी, 27 गेंदें, 29 रनों की आवश्यकता। रोहन कोल 31 पे, सोहराब 0 पे। इससे पूर्व अर्धशतक की पारी खेली वहां पर वो बल्लेबाज ने, बहुत ही बेहतरीन पारी, अर्धशतकीय पारी। 27 गेंदों से 29 चाहिए। यहाँ गति परिवर्तन, गति में थोड़ा मिश्रण किया जरूर, चकमा दिया बल्लेबाज को। एक और डॉट गेंद, 26 से 29। हिलव्यू राजौरी बनाम यूनाइटेड इंपोर्ट्स 14वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन का। कल मात्र 1 मुकाबला, शाम 6 बजे आपके साथ लाइव एक्शन में जुड़ेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और उसके अलावा रेड एफएम जेके के माध्यम से। 125 पे 5, 15.4, 26 गेंदों से 29। शाहरुख डार गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्रोक बेहतर, पर उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग सज्जू द्वारा। निश्चित तौर पर यह कुछ रन जरूर बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 125 से बढ़कर रन संख्या संभवतः 126। अच्छा स्ट्रोक था और उछलते हुए उस गेंद की ऊंचाई तक पहुंचे।
25 से 28, 126 पे 5, 25 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता। शाहरुख डार इस ओवर में अगली बार एक सिंगल मिल जाएगा। चहलकदमी करते दोनों बल्लेबाजों को। 4 ओवर में 27 रन चाहिए। 127 पे 5, 16 समाप्त, 4 ओवर का खेल शेष। "27 needed from 4 overs. Garo and Rohan Cole brought about a change. And Rohan, his cameo of 32 from 18, that enterprising knock set the tone in a perfect manner here. 127 for 5. 27 more runs needed from 24 balls. 154 is the target. There is shot for LBW and up goes the finger. Saurabh is given out. Got to go. Wicket number 6 down. And Sahil Shafi has his 4th one. It's a 4-wicket haul. The highest run getter. And in today's game, 49 with bat, 4 wickets with ball. And what a cricketer he is. A good call again, a good decision. Pretty plumb right in front. And Sahil Shafi strikes again. Rohan Cole is still out in the middle. That brings Suma lefty in at number 8. Saurabh gone, going back to pavilion. Unable to express himself. Can't impress anyone here. Uma lefty achieved a rare feat in today's game, picking up 500, completing his 500 wickets in local cricket. And that was confirmed by Crick Heroes. Sahil in his 4th over. 4 wickets for 14 runs. Fazan, little chat with Uma lefty. 127 for 6. Hillview need a proper view to find those 27 remaining runs from 23 balls. OAS is going to be around that corner area. Here is Sahil again. Uma lefty. Surprised by Sahil Shafi there. What to do? How to keep this one away? Is something left for United in this one here? 127 for 6. 27 behind. That's a good looking shot. Nice shape from the batter. Should beat the man. It does. That's gonna be runs. 4 of them. Avoided that collision of Anwani and Tafazul. And ball beating both the fielders to perfection. Driven straight on drive. Quality shot. 4 of them. Quality runs here. 23 away. Uma lefty, very watchful. Knows his duty. He knows his role very well here. Exciting passage of play. 23 away from 21. Wanted a single. Gentle dab. Trying to scamper through and is denied. It's 131 for 6. 20 balls, 23 away. That one worked away nicely. Neatly done. Kept that one square on the on. 22 from 19. Important single coming here. It's 132 on the board. Rohan Cole is going to be on strike here. Man in form. He's got eyes in. Not for runs. Down to the remaining 18 balls. They're 22 runs behind. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail.
Athwas with confidence, and rest of the sponsors, thank you very much for joining hands in making this massive, one great event, extravaganza, cricket toss, and one of the best in the valley here. 22 need from 18, a platform where local cricketers are getting a kind of boost, and they are getting a kind of exposure, and they're gonna introspect, they're gonna look into themselves with deep immersion. We'll be working on the basic tactics and techniques in months to come to polish themselves and groom up a bit, enhancing themselves with the latest techniques to adapt to the conditions. The one we have had here, the two pitches, the surface, it's totally different. And if you bat here, you can bat anywhere in the world. 22 needed from 18. In the meantime, who's going to operate? It's back to Shahrukh again. Captain goes back to his man weapon, who's potent with the ball. He has played basic level cricket. He has been the part of that side. Now he's rendering his services for United Imports. Could be tight here. Directed needed. But that's a wayward return from Faizan Roof. But look at the commitment this boy is showing here. The boy has got 4 stitches on his left hand and is still going strong. Sometimes it can be risky. It was better to rest, but he decided to walk out, and he's fielding here for his team. The left hand may be a concern, so he need to work on it and try to protect it. It was better to go with that substitute in place of Faizan. I understand you don't have too much in the kitty today. You were left with no other option and choice. You brought in Faizan Roof, but that doesn't mean you use this lad, as he met with an injury a few days back, and that could be the disaster in coming days. You have other tournaments lined up. You need your best possible 11 for other events. To 18 need from 17 balls. 1-3-6 for 6. 18 more needed. 17 balls. He wided that one. Shahrukh Dar. Score ticker is a bit late, so bear with us. It isn't our fault. There is a kind of technical snag glitch. Scorer will rectify it. It needs a rectification, and he will work on it. And he is on job at the moment. Our team is looking into it. 70 needed from 16 balls. Shade over on a ball. Their game to lose. They still have 4 wickets in kitty. Shahrukh and rest of the members, they need a miracle to prevail. They need quality deliveries here to dictate terms and to get better of the batters. Shahrukh again. And that one is going to run down to the third man. There was an outside edge, and wicketkeeper is having some problem there. He's unable to control that one again. He's having some problem there. He hasn't been up to the mark. That one, it was wide of the wicketkeeper, but those reflexes are missing. That isn't there. He lost control. Plenty of time is behind stumps, but that one, it was pretty away. But the laziness is quite visible. That's visible to the naked eye. He's having some issues. He isn't quick. He needs that agility that's lacking. Well, Khalid, when Khalid is keeping stumps just 13 away, he's so fit there. He's so quick. And he's known for those reflexes, and that's a quality shot. Down to the back with a point boundary for 4. Just 9 needed from 14 balls, and Hillview are right on top again here. They're back into this one, and Umar Lefty is keeping their hopes alive. And this lad is keeping them in the game, in the chase. The local boy, he's from Heart of Steel. Hillview, Mesha players from Jammu Province.
And one coming from Udhampur. They're 9 away. 4 wickets in kitty. Their game to lose. Shahrukh to continue. Nicely worked away. Scare on the on. He will keep the strike for the next over. They're 7 away from 12 balls. 2 boundaries coming in Shahrukh Dar's over. And that mistake of wicketkeeper who wasn't as agile as he should have been there. He let the ball go past. Now Faizan has got the ball in his hand. Only miracle can help United Imports now in today's match. .147 for 6. Oh, look at that shot. Sahil can't get to the ball. It was in the air for a while. 6 away. 1 big shot and they will be over the line. .148 for 6. 6 needed from 11 balls. Faizan. He's still designing the field. He believes there is something left. He's not going to give up. That's what great athleticism is all about. 6 needed. Driven straight. Look at that one. It hits him. It takes another body blow. Remember, gentlemen, you're not okay. You're not 100% fit. You got stitches on your left hand. Take care of your legs. 5 away. Umar going with that straight one. Straightish one. Wow. Just 5 away. 4 to tie. 5 to win. Ron picks that slower into the fans for 4. Scores a level. Hillview need 1 run to prevail. And to walk away with 2 invaluable points. And 2 invaluable points up for grabs. Silver picked up nicely by Rohan Cole. Just 1 away. Just 1 away from 9 balls. Here is Faizan Roof. Banger in shot. And he bangs him away. That's gone miles away into the night sky. And so that's it we have for you from match number 14. And this is Munawar Tanveer signing on behalf of Sheikh Nazir and rest of the members, taking you back with this message that we shall be back tomorrow with that only encounter around 6 p.m. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.